सर एक बार टेस्ट कर लीजिए सर, ऑन करके सर बात कर लीजिए सर, मैं बात करता हूँ। मैं अंदर जा रहा हूँ सर। हेलो सर, नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ ठीक है सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ये आवाज है बराबर? क्लियर मिल रही है सर? अब आवाज कम है आपकी थोड़ी सी। अच्छा, मेरी आवाज तो मिल रही। हाँ हेलो सर, बढ़वाएं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो थोड़ा बढ़वा दीजिए। सर जी, आवाज अभी कम है सर। अभी देखिए सर। हाँ हेलो सर, अभी बढ़ी सर? हेलो, हाँ अब 1 ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोकुल से बात की मैंने, बता रहा है कुछ? लोकल कैमरा हमारा कनेक्टेड है, कैमरा नेटवर्क हम उनको कुछ आईपी लिख रहे हैं, लोकल रहते हैं तो उसी एरिया आगे जो रखते हैं अभी जैसे इसको एक्सेस करोगे इसी को कर रहा हूँ। ठीक।
signs and stop trains in case of need. KAVACH, meant to play a key role. हेलो पुश बटन है क्या इसमें? हेलो माइक टेस्ट। हेलो सुनाई दे रही है सबको? स्पीकर तो ये वाला ही है ना? हेलो 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 टेस्टिंग हेलो हेलो। नमस्कार नमस्कार, मैं नवीन भूषण शर्मा डिले क्यों आ रहा है? डिले क्यों आ रहा है? रिकॉर्डिंग है। नमस्कार हाँ कोई भरोसा नहीं है। किसी से फोन पे बात करना बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। और लोग भेज भी देते हैं रिकॉर्डिंग। हाँ अच्छा आजकल लोगों का एक ही काम है, बैठ के फॉरवर्ड बस नहीं तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग या जो मिले बस। अच्छा पूरा नहीं देखते। हाँ सपोज मैंने आपने हमको वीडियो भेजा, मैं उसको पूरा नहीं देखूंगा, थोड़ा सा देखूंगा, फॉरवर्ड कर देखना नहीं है। सही है।
हेलो, नमस्कार। मैं नवीन भूषण शर्मा यहाँ उपस्थित समस्त आदरणीय अतिथियों का सादर अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। नेचुरल ये लेट क्यों आ रहा है? रिकॉर्डिंग क्यों आ रही है? नहीं तो रिकॉर्डिंग बाद में तो आ रही है, रिकॉर्डिंग आ रही है। हाँ, ये रिकॉर्डिंग टाइप आ रहा है। डिले क्यों आ रहा है आवाज में? रिकॉर्डिंग टाइप क्यों आ रही है आवाज बाद में? हेलो, यस, देखो अब आ रही है आवाज। अब आएगा। हेलो रिकॉर्डिंग कुछ गड़बड़ हो रहा है तो बता दो। स्टाइल मारेगा। हेलो, अभी देखो अब ये अभी जो आपने बोला था अब आ गया। आवाज सही है। रिकॉर्ड हो गई जस्ट कोई प्रेजेंटेशन देंगे क्या लैपटॉप पे? हाँ देंगे ना, सर की प्रेजेंटेशन है। मैं तो कहाँ रखेंगे लैपटॉप? लैपटॉप तो सब अपनी डेस्क से ही देंगे, वो कनेक्ट हो जाएगी। पहले तो कराए तो गड़बड़ होगा। जो आप बोल रहे हो आवाज बिल्कुल सही है। हेलो 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 हेलो, कहाँ वाली की दिक्कत हो रही है भाई? क्या हुआ? सही काम कर रहे हैं। आप अंदर, हाँ सर सही काम है। आप अंदर जाइए, आप अंदर जाइए। पता नहीं चल रहा कौन सा। देखो रिपीटेड आवाज तो हाँ जी सर, सर अभी ऑनलाइन जा रही है, अभी ऑनलाइन भी कनेक्टेड है तो हमारे लोकल इसकी आवाज आ जाती है, अभी ऑनलाइन की आवाज भी तो आती है। हेलो हेलो, रिपीटेड आवाज आ रही है अभी? हेलो 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 हेलो, क्या सर? हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, देखते हैं। हेलो 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 हेलो, ये तो जाएगी नहीं सर आवाज। हेलो हेलो यस सर, हाँ सर बुला लीजिए, हाँ सर बुला लीजिए सर। हेलो 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 हेलो, हाँ सर जी नमस्कार, मेरी आवाज ठीक मिल रही है सर? हाँ आपकी आवाज मिल रही है, मेरी आवाज मिल रही है? आपकी भी आवाज ठीक मिल रही है सर। हाँ तो रुकना कुछ देर अभी। जी सर। इसकी आ रही होगी सर, इसकी, अरे सर इसकी आ रही होगी है। अब देखते हैं सर, ठीक है? अब इसका कुछ है, ठीक है? साउंड है अभी, अब देखते हैं। हेलो 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 1 2 3। हाँ सर जी आपकी आवाज ठीक आ रही है। ठीक है, अब आप चुप रहो विजय जी। अच्छा ठीक।
माइक तो सारे सही है ना, माइक तो हेलो, अब आ रही है आवाज ब्रजेश? मिल रही है सर, आपकी आवाज ठीक मिल रही मेरी है आवाज सर। आ रही है ब्रजेश? बिल्कुल ठीक मिल रही है सर आपकी आवाज। सब सही है। हेलो हेलो 1 2 3 4। हेलो 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 2 3 4 5 6। एक बार ड्राई रन कर लेते हैं सर नवीन। चलो शुरू कर। कहाँ तुम कहाँ बैठो? नहीं नहीं, तुम यहाँ रहो ना, किसी का प्रेजेंटेशन भी जो देने आएगा ना वो यहाँ बैठ जाएगा, तो खाली रखते हैं क्योंकि एडी भी सर आएंगे। एडी ये डायरेक्टर को सपोर्ट करने के लिए आएगा और ये सर 5 दिन के डिले इसमें तो आ रहा था ना, वो प्ले हुआ था तो उसका आवाज दे देते हैं। प्रेजेंटेशन फंक्शन कर सकता है आवाज के बंद कर दिया ना, कैसे बंद कर दिया सर? आर्टिस्ट बंद ही कर दिया, ये भी पास में कंटिन्यू करेगा। सीनियर स्किल सारे उसमें बैठेंगे क्योंकि सारे बीओस आएंगे तो नहीं आ पाएंगे, तो बीओस आएंगे, बीओस शायद बीओस भी पूरे ना आ पाए। आप तो मान लो आगे बीओस ही आ पाएंगे। हाँ, एक्स्ट्रा नहीं है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। संरक्षा, द्रुत गति एवं क्षमता के साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं को गुणवत्ता के साथ प्रदान करना, यही है भारतीय रेलवे का लक्ष्य। ऐसे रख लूंगा सर। एक फाइल मंगा लो जो एल फोल्डर मंगा लो। नहीं एल फोल्डर नहीं, काला वाला होता है इसमें पेज पलट जाए और उसी में मतलब हो जाएगा। इसमें तो नहीं होगा। कालरा को ला लो। हाँ चलो शुरू करो। नमस्कार, मैं नवीन भूषण शर्मा, एडीएसटी 12, यहाँ उपस्थित समस्त आदरणीय अतिथियों का सादर अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। सर उसके बाद तो यही करना है ना, डायरेक्ट स्मृति पौधा। हाँ, आपने बोला था ये फिर बाद में करना है। चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर। सबसे पहले क्या तुमने स्वागत कर दिया, अब एक लाइन में स्वागत बोला है सर। फिर हमारे मुख्य अतिथि का हम अभिनंदन करते हैं, तो उसके लिए एडीआरएम तुमने जो प्लान किया नीचे खड़ा है वो। कुछ रहेगा तो फिर अपन बाद में ठीक सर ड्राई रन करना है सर पीसीएसटी सर को आप देंगे सर पौधा, पीसीएसटी सर को सर आप देंगे और मनोज जैन सर फिर उनको देंगे टीआरएम सर, और फिर सर देंगे सीएसटी प्रोजेक्ट को, और फिर चलो चली जाओ, नीचे खड़ा है। ठीक थोड़ा सा आवाज का मत, थोड़ा सा क्यों हो गया सर? और यूट्यूब पे सर इसको टेलीकास्ट भी कर रहा है लाइव। जैसा भी आप बोल रहे हैं लेक्चर में बोल रहे हैं ना, ऑफिसर में तभी इसी थोड़ा सा फिर आपको
नमस्कार, मैं नवीन भूषण शर्मा, सहायक मंडल व संकीय दूरसंचार अभियंता 12 यहाँ उपस्थित समस्त आदरणीय अतिथियों का सादर अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जनरली हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, तेज। हाँ, तेज लेकिन इसमें थोड़ा टाइम गैप दो। हाँ, आप बिल्कुल सही। सर ये किया है। शुरुआत में ये संरक्षा द्रुत गति एवं क्षमता के साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं को गुणवत्ता के साथ प्रदान करना, यही है भारतीय रेलवे का लक्ष्य। नमस्कार, मैं नवीन भूषण शर्मा, सहायक मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता 12 यहाँ उपस्थित समस्त आदरणीय अतिथियों का सादर अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं श्रीमान एडीआरएम टी&आई महोदय से निवेदन करता हूं कि आप माननीय पीसीएसटी महोदय का स्मृति पौधा प्रदान कर स्वागत करें। श्रीमान एडीआरएम टी&आई सर, फिर वो दे देंगे, फिर उसके बाद धन्यवाद सर। अब मैं श्रीमान एडीआरएम ओएनडी महोदय से निवेदन करता हूं कि आप माननीय श्री बोलूं फिर सर महोदय लगा दी। हाँ सर, महोदय या सर लगा दिया तो मैं एडीआरएम ओएनडी महोदय से सहायक मंडल अभियंता एडीएसटी 12 है ना, सहायक मंडल दूरसंचार अभियंता। श्रीमान हटा दूंगा सर। इंजीनियर लगा दो, अभियंता को इंजीनियर लगा। अभियंता तो बना के लगा। सहायक एडीएसटी में अभियंता की जगह इंजीनियर। ठीक है, इसमें ये श्रीमान को हटवा देंगे, थोड़ा दूसरा महोदय। ठीक है, ठीक। श्रीमान एडीआरएम ओएनडी सर नहीं है, मतलब सिंपल एडीआरएम ओएनडी सर। ऐसे ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम होता तब श्री लगाते हैं। एडीआरएम ओएनडी सर, सीएनडीएसटी को, बस सीएनडीएसटी को कोटा है ना। ठीक है सर। सीएसटीपी सर, महोदय सर, महोदय लिखा सर माननीय लगवा दीजिए। एडीआरएम पीसीएसटी के आगे लगा है ना, माननीय माननीय एडीआरएम, माननीय डीआरएम, माननीय पीसीएसटी, माननीय कहा, ये ज्यादा माननीय, यहाँ 3 जगह तो लगा है। महोदय रहने दीजिए सर। ठीक है, वो महोदय महाप्रबंधक और उनके लिए। अरे नहीं, ठीक है सर। सर माननीय पीसीएसटी महोदय सर, पूरा अच्छा लगता है। ठीक है, तो माननीय पीसीएसटी महोदय, माननीय मंडल। मैं एडीआरएम टीएनआई सर से निवेदन करता हूं कि आप माननीय पीसीएसटी महोदय का स्मृति पौधा प्रदान कर स्वागत करें। टीएनआई को कर दो ना। हाँ, तो वो इस तरफ बैठेंगे, सही। थोड़ा सा संयोग से बोलो तो फिर देखा। मैं एडीआरएम ओएनए महोदय से निवेदन करता हूं कि आप माननीय डीआरएम महोदय का स्मृति पौधा प्रदान कर स्वागत करें। धन्यवाद श्रीमान। मैं सीनियर डीएसटी कोऑर्डिनेशन कोटा से निवेदन करता हूं कि आप माननीय सीएसटी प्रोजेक्ट कोटा का सीएसटी प्रोजेक्ट महोदय का स्मृति पौधा प्रदान कर स्वागत करें। धन्यवाद श्रीमान। ये धन्यवाद श्रीमान, आखिरी भी जब वो पौधा दे देंगे उसके बाद एक्चुअली हिंदी इंग्लिश में थैंक यू सर। अच्छा यार, उसका माइंडसेट जो बन गया। हाँ सर, वो फिर वो हो जाएगा। श्रीमान भी ऑथेंटिक वर्ड है, जो बोलना बोलो। फिर उसके बाद यहाँ से ऑथेंटिक वर्ड है। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सत्यवीर सिंह, पीसीएसटी पश्चिम मध्य रेलवे, श्री पंकज शर्मा, डीआरएम कोटा, श्री एकनाथ मोहकर,
CST प्रोजेक्ट WCR, श्री MM श्रीवास्तव, डायरेक्टर सिग्नल RDSO, श्री मनोज जैन ADRM O&A, श्री R सारस्वत ADRM TNI, समस्त शाखा अधिकारी महोदय एवं अन्य उपस्थित समस्त अधिकारीगण। शाखा अधिकारी से पहले एक डायरेक्टर जो है ना, वो शाखा अधिकारी के पहले डायरेक्टर बोलना। ये डायरेक्टर हैं, एडीआरएम्स के बाद में आएंगे ये। अच्छा। और एडीआरएम्स के बाद में तुरंत नहीं आएंगे, एडीआरएम के बाद में आएंगे 160 KMPH के ये चीफ इंजीनियर RSW FNCO इंफ्रा। सर वो लिखवाओ फिर, सर वो लिखा हुआ नहीं है। SAG ऑफिसर्स ऑफ 160 KMPH कर दो, SAG ऑफिसर्स ऑफ 160 KMPH, ऑफिसर्स ऑफ 160 KMPH, और उसके बाद डायरेक्टर आएगा। मतलब पहले एडीआरएम्स आएंगे, फिर SAG ऑफिसर आएंगे, ये जो है ना ये ऊपर आएगा, ये दोनों एडीआरएम ऊपर आएंगे। हाँ फिर बिल्कुल 160 KMPH के SAG ऑफिसर, उसके बाद डायरेक्टर को करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आवाज अरे सर बिना माइक के आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सत्यवीर सिंह PCST पश्चिम मध्य रेलवे, श्री पंकज शर्मा DRM कोटा, श्री एकनाथ मोहकर CST प्रोजेक्ट WCR, SAG ऑफिसर्स ऑफ इससे पहले ये बोलना है, श्री मनोज जैन ADRM O&A, श्री R सारस्वत ADRM TNI, SAG ऑफिसर्स ऑफ 160 KMPH, श्री MM श्रीवास्तव डायरेक्टर सिग्नल RDSO, समस्त शाखा अधिकारी महोदय एवं अन्य उपस्थित समस्त अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए श्री VNM राव CST प्रोजेक्ट SCR, श्री मुनि कुमार डिप्टी CST प्रोजेक्ट SCR, मैं आप सभी उपस्थित अतिथियों का सादर अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मुझे लग रहा है शायद CSE भी जुड़े हैं, CSE साहब जुड़े हैं, मेरे ख्याल से जुड़ रहे हैं, तो उसमें लिख दो कि मुख्यालय के अधिकारी जो VC से जो जुड़े हैं ना, उसके बाद मुख्यालय के अन्य अधिकारी जो VC से जुड़े हैं, जुड़े हैं ना, लिखा था मुख्यालय के अधिकारी। हाँ तो ओपन लिंक दे दिया है ना, तो यस जो लोग मैं समझ लो। एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े श्री VNM राव CST प्रोजेक्ट SCR, श्री मुनि कुमार डिप्टी CST प्रोजेक्ट SCR एवं मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण, मैं सभी अतिथियों का सादर अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु श्रीमान PCST महोदय से कार्यक्रम को शुरू करने की आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद श्रीमान। अहर्निशम मार्गम दृश्यामः, ऑलवेज शोइंग द राइट पाथ। गीता से लिया गया यह श्लोक हमारे कवच सिस्टम की कार्यप्रणाली की भली भांति व्याख्या करता है। भारतीय रेल के द्वारा 4 मार्च को कवच प्रणाली का सफल परीक्षण संतनगर शंकरपल्ली खंड साउथ सेंट्रल रेलवे पर किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में हम कवच सिस्टम के बारे में तकनीकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सनत नगर है, संत नगर लिखे हो गया, मैंने हिंदी में सनत नगर। हाँ सही है। हम संत सुनाई दी। नहीं, सनत ठीक है, सही है। सनत नगर शंकरपल्ली, मैंने तो उससे लिया था, मतलब नेट से लिया था। ठीक है, सनत नगर शंकरपल्ली खंड ही है ना? है तो वो सुलहली है, वाडी सनत नगर वाडी सेक्शन पूरा सेक्शन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। साउथ सेंट्रल रेलवे पे किया इसमें भी ये मतलब स्टेशन है, एक्चुअली 25 स्टेशन है। अच्छा, हाँ। तो आप बता दीजिए क्या है, फिर वो कर दें। वाडी सनत नगर वाडी सेक्शन, वाडी वाडी उसका नंबर है सनत नगर वाडी और बीदर डैश बीदर हाँ बीदर सेक्शन। अच्छा, बीदर तो कर्नाटका में आ गया। नहीं कर्नाटका में है, लेकिन वो वहां तक है। हाँ। संत नगर वाडी एवं बीदर खंड
साउथ सेंट्रल रेलवे पर किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में हम कवच सिस्टम के बारे में तकनीकी जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री MM श्रीवास्तव, डायरेक्टर सिग्नल RDSO को। वे हमें टिकास यानी कवच पर प्रेजेंटेशन देंगे। श्रीमान सर आएंगे, फिर प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन हमको नहीं देना, हमें क्या प्रेजेंटेशन हमको देना है। अच्छा, आपको देना है। वो ओपन करेंगे, बस 2 मिनट में दे देंगे हमको। अच्छा, आप AD हैं? रिपोर्ट हो गए? ठीक हो? आपके जरेडा जी हमारे थे एक्सपर्ट विकास के। अच्छा, जरेडा जी नहीं है जो जोधपुर में? हाँ, राहुल जडेजा। हाँ, उनके बाद में मतलब अच्छा अच्छा, तो वो रेलवे में आ गया था। हाँ, उस दिन उन्हीं से बात किया था मैंने। CST से बात है। नमस्ते सर। हेलो, आप बताओ। हाँ ब्रिजेश जी, आवाज आ रही है? सर नमस्कार। आवाज आ रही है? आपकी आवाज मिल रही है? मिल रही है ना? जी सर, ठीक है। ठीक मिल रही है सर। ठीक है।
सर एक बार कर लीजिए लॉगिन। हाँ लॉगिन हो गया हूँ। हाँ सर मैं एक्चुअली जाता हूँ सर वहीं पे थोड़ा सा आगे तक पीछे। सर इसको स्क्रीन शेयर का आप ले लीजिए, उसमें हो जाएगा। हाँ एक मिनट हाँ just 2 minutes. I am just copying my video in pen drive. और हाँ हाँ स्क्रीन शेयर अभी हो रहा है। हाँ तो सर इसमें वीडियो एक बार चला के देख लीजिए। हाँ टेस्टिंग का कौन है कोई देखने वाला? सर मैं पहुंच गया हूँ। हाँ ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं, वीडियो शेयर करना चाहते हैं। मुनि कुमार सर जो है साउथ सेंटर से, वो जूम पे वीडियो शेयर करना चाहते हैं। सर स्क्रीन शेयर में हाँ ऑल पार्टिसिपेंट्स हु कैन शेयर किया हुआ है। हाँ सर आप शेयर करिए स्क्रीन। हाँ एक मिनट। हाँ वो करेंगे, वो करेंगे। हाँ हाँ उनको करना। पहला सर आपका, पहला आपका है सर। नहीं वो सर हम चेक कर रहे हैं वीडियो सर आपका आ गया सर। हाँ मैं अभी क्या करूँ? सर आपको जो वीडियो चलाना है वो चलाइए। चल हाँ अभी दिख रहा है कुछ स्क्रीन? हाँ दिख रहा है सर, स्क्रीन दिख रही है। हाँ आवाज आ रही? The Indian Railways is witnessing a monumental rail revolution. Train collision avoidance system, also known as KAVACH, is an indigenously developed automatic train protection system under the aegis of RDSO. KAVACH is अच्छा शेयर विथ ऑडियो, शेयर स्क्रीन आ गया। हाँ आपका माइक भी म्यूट हो जाएगा सर, लेकिन जैसे ही आप शेयर करोगे हाँ ऑडियो करोगे अगर तो हाँ आपका माइक म्यूट हो जाएगा। नहीं शेयर हाँ शेयर ओके सेलेक्ट है सेलेक्ट सेम है सिस्टम। crucial information pertaining to approaching signal aspects in the loco through नहीं आ रहा क्या? interface. नहीं आ रही है। KAVACH will alert the loco pilots to reduce speed proportionately. ऐसे ही सर ऑडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। In case the loco नहीं उनको उनसे बात करो दीजिए ना, मैं उनसे सेलेक्टेड स्पीकर। हाँ सर देख लेते हैं सर, आप जैसा है तो बिना ऑडियो कर देना, आप एक्सप्लेन कर देना बोल के वीडियो चला के। हाँ नहीं तो मैं आपको वीडियो शेयर करूँ क्या? मैं आपको वीडियो शेयर करूँ क्या? where the loco pilots सर एक्चुअली क्या स्टार्ट की होने वाली है तो फोन वगैरह आ रहा है। हाँ KAVACH is a comprehensive automatic नहीं मैं आपको शेयर करता हूँ, आप उधर से प्ले कर सकते हैं क्या? सर मैं आपको लिंक दे देता हूँ। हेलो शेयर नाम पे इनेबल करना पड़ेगा। ये कहाँ से आया ये? नीचे सर आता है सिलेक्ट विंडो ऑन एप्लीकेशन। नहीं उनको एनी डेस्क चाहिए। नहीं सर क्लिक करेंगे ना तो एक आता है सर उसमें। हाँ एरो पे ना क्लिक करके डायरेक्ट शेयर पे क्लिक करेंगे तो आता है शेयर साउंड। अच्छा तो गूगल में जो गया उसमें यार मत करना। हाँ सर जो शेयर लिखा था सर स्क्रीन शेयर। हाँ नीचे हाँ शेयर साउंड है। हाँ हाँ देखिए हाँ मैं अभी आ गया बताता हूँ आपको। स्क्रीन शेयर में आ गया। आ गया हाँ सर उसमें साउंड वाले पे click हाँ करके वो भी आ गया। हाँ अब सर वो एक बार चलाइए सर वीडियो। हाँ Train protection system works on the principle of continuous update of movement authority, which is featured in advanced train protection systems used across the world. The station cover computes the movement authority based on approaching signal aspects and location of the train. KAVACH works by constantly sharing information between three major subsystems such as station KAVACH, local KAVACH, and on-track equipment RFID tags.
RFID tags are installed on the track at every 1 kilometer in the block section, at approach of signals and at every berthing track. The static information such as location information, track identity of the RFID tags mounted on the rail sleepers are captured via RFID. Witnessing a monumental train revolution. इसमें पढ़ के मेरे को बताना बाद में यार, तुम अब पढ़ो उसमें, इसमें भी बात है नहीं, 2 मिनट से समझ आएगा तुम्हें सब, बिल्कुल जो समझ आएंगे ना, 2 मिनट समझ आ जाएगा कुछ आपको। पीछे कर रहे हैं क्या ऐसे, ये ऐसे नहीं बदल कर रहे हैं। anyhow मैं अभी, हाँ हेलो अनुज, आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है उनका? सर तेज बोलिए थोड़ा। हाँ हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। सर थोड़ा स्लो है सर, थोड़ा तेज करिए। अच्छा स्लो आ रहा है? हाँ सर, वॉल्यूम थोड़ा कम लग रहा है। ओके, नहीं उधर आप इंक्रीज कर सकते हैं क्या? इधर वॉल्यूम बढ़ा देना है सर, यहाँ तो मैक्सिमम है सर। अभी बोलिए सर। अनुज अभी नहीं आ रहा है क्या? क्यों आ रहा है? नहीं आ रहा, कम आ रही है सर आवाज। ओहो, तो क्या करेंगे अभी? सिस्टम कुछ लैपटॉप लगाए क्या उधर? क्या लगा है उधर? लैपटॉप लगा है, कंप्यूटर लगा है, क्या लगा है? तीनों लोग सर एक साथ आ जाएंगे। हाँ सर। हेलो, हाँ सर। हाँ अनुज बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या? आवाज आ रही है? हाँ क्यों आवाज सर बोलिए को। हाँ अनुज अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आवाज यार नहीं आ रहा है क्या? अनुज आप नहीं है क्या सिस्टम? सर बोलिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ अनुज। आ रही है आवाज? हेलो, हाँ विजय जी बोलिए। हाँ आवाज आ रहा है जी। 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 3 9 4 10। 5 6 7 8। सर एक मिनट थोड़ा शांत रहिए थोड़ा जी सा। हाँ विजय जी बोलिए। हाँ 1 2 3 आवाज आ रहा है 4 क्या? 5 1 6 2 7 3 8 9 4 10। 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको 80 पे कीजिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है 80 क्या? पे कीजिए मेरे को। आवाज आ रही है जी? 74 होगा वैसे तो नंबर जहाँ आवाज पे। ठीक आ रही है? आ रही है? आप विजय जी सुनाई दे रुकना रहा है थोड़ा क्या? देर, ठीक है? मेरे पे नहीं आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या? बता दूंगा आपको ना। अच्छा सर बैठे हैं तो मेरे ख्याल से 174 हाँ दिया विजय है, बोलो। हम कर लेता हूँ। नहीं 1 आपको 2 आवाज आ रही है क्या? 3 मेरी 4 आवाज 5 6 7 8 9 10। आ रही नहीं? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, हेलो बोर्डरूम कोटा हाँ मीनू को सर बोले सर। आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, हाँ सर आपकी आवाज आ रही है। ठीक आ रही है क्या? ठीक सर, मैं और पर हाँ नो प्रॉब्लम ना। ठीक है जी, राइट। टेस्टिंग ओवर ना। क्या नंबर क्या दिया था वो दूसरी चीज को 174 पता कर लो। हाँ जी, हाँ हाँ अभी करते हैं, शुरू करते हैं।
सर आवाज आ रही है सर? हाँ ठीक आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आवाज ठीक मिली सर? हेलो 184 गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। संरक्षा, द्रुत गति एवं क्षमता के साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं को गुणवत्ता के साथ प्रदान करना, यही है भारतीय रेलवे का लक्ष्य। नमस्कार, मैं नवीन भूषण शर्मा, एडीएसटी 12 यहाँ उपस्थित समस्त आदरणीय अतिथियों का सादर अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। अभी वो एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है ना, तो तुम्हें थोड़ा बिजी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं एडीआरएम टीएनआई सर से निवेदन करता हूं कि आप माननीय पीसीएसटी सर को स्मृति पौधा प्रदान कर स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं एडीआरएम ओएनए सर से निवेदन करता हूं कि आप माननीय डीआरएम सर का स्मृति पौधा प्रदान कर स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं सीनियर डीएसटी कोऑर्डिनेशन कोटा सर से निवेदन करता हूं कि आप माननीय सीएसटी प्रोजेक्ट सर का स्मृति पौधा प्रदान कर स्वागत करें। धन्यवाद सर। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सत्यवीर सिंह, पीसीएसटी पश्चिम मध्य रेलवे, श्री पंकज शर्मा, डीआरएम कोटा, श्री एकनाथ मोहकर, सीएसटी प्रोजेक्ट डब्ल्यूसीआर, श्री मनोज जैन, एडीआरएम ओएनए, श्री आर सारस्वत, एडीआरएम टीएनआई, एसएजी ऑफिसर्स ऑफ 160 केएमपीएच, श्री एमएम श्रीवास्तव, डायरेक्टर सिग्नल आरडीएसओ, समस्त शाखा अधिकारी महोदय एवं अन्य उपस्थित समस्त अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए श्री वीएनएम राव, सीएसटी प्रोजेक्ट एससीआर, श्री मुनि कुमार, डिप्टी सीएसटी प्रोजेक्ट एससीआर एवं मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण, समस्त आदरणीय अतिथियों का सादर अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अब मैं श्रीमान पीसीएसटी महोदय से कार्यक्रम को शुरू करने की आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद सर। अहर्निशम मार्गम दृश्यामः, ऑलवेज शोइंग द राइट पाथ। गीता से लिया गया यह श्लोक हमारे कवच सिस्टम की कार्यप्रणाली की भली भांति व्याख्या करता है। भारतीय रेल के द्वारा 4 मार्च को कवच प्रणाली का सफल परीक्षण संतनगर, वाड़ी, विदर खंड एससीआर पर किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में हम कवच सिस्टम के बारे में तकनीकी जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री एमएम श्रीवास्तव, डायरेक्टर सिग्नल आरडीएसओ को। वे हमें टिकास कवच के बारे में तकनीकी प्रेजेंटेशन देंगे। श्रीमान। धन्यवाद। Respected PCST sir, respected DRM sir, CST project sir,
ADRM sir, CPM sir and other fellow officers, और साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सारे ऑफिसर्स. We are here to give a small presentation, technical presentation regarding KAVACH. A small request from all of you that we will finish the presentation. Please note down your queries, because I know there are so many queries regarding this KAVACH, and please note down these queries when we will finish the project. Student coordination कहाँ है? और DN North, DN South क्यों नहीं है? When we will finish the presentation, then please raise your queries. हो सकता है आप लोग के mostly queries इसमें cover हो जाए, इसलिए ऐसा request है. मेरे साथ में Mr. AD, Mr. RN Singh, AD RDSO is available here. उनका vast experience है इसमें, पिछले 5 साल से वो इसी कवच प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, और सारे छोटे मोटे जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं इन्होंने कवर किया है. ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन फाइनलाइजेशन ऑफ न्यू स्पेसिफिकेशन आल्सो, ओल्डर स्पेसिफिकेशन आल्सो. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एडी मिस्टर आरएन सिंह से कि प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें. Good morning, sir. I am RN Singh, AD Signal, ADSO. I want to give the technical presentation of this KAVACH system, which is going to deploy it in the railway. This introduction, I will cover all of this topic: silent feature, principle of working, experience in trial of SCR, 160 kmph trial, auto section trial, and 2.0. What are the things we are going to ahead improve it, and various brakes interfaces. We have started this project in 2015. Installation in South Central Railway. We have gone and a different trial and other thing. And July 2021, installation continue with the advanced option. This KAVACH. Previously, it was known as a train collision avoidance system, but now Minister has given its KAVACH name, so its name has been changed. And this is aid to loco pilot. It gives all the information to loco pilot how to drive this loco and cars. As it is mentioned that KAVACH will be an add to the loco pilot. The most important thing is normally driver will work as he is working. If he is not performing his job, then KAVACH will come in the future. और उसके बाद में if suppose ड्राइवर को ब्रेक लगाना है और उसने ब्रेक अप्लाई नहीं किया, then automatically KAVACH will come in the picture, और KAVACH जो स्पीड उसके लिए रिक्वायर्ड है उतने स्पीड पे ब्रेक लगा देगा if it is increased that. नहीं, इसमें जैसे अभी TWS था या सर जो इसमें सिस्टम लगा था ना आगरा दिल्ली में, उसके TPWS तो उसके विज़ क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा कहीं पर टच कर दीजिए. ठीक है सर, वो कवर हो जाएगा सर. बेसिक डिफरेंस ये है सर कि जब उसमें क्या होता था, एक बार ब्रेक लगाता था तो वो हॉल्ट पे आना पड़ता था उसको. दैट फीचर इज नॉट अवेलेबल, और इसको मॉडिफाई किया गया है. इसमें ब्रेक लगेगा, उसके बाद ड्राइवर अपने आप जब जैसे ही प्रिस्क्राइब्ड स्पीड से वो नीचे हो जाएंगे. इसमें एक है, अभी शो करेंगे सर, कि उसमें शो होता है ग्रीन कलर से कि आपका कहाँ तक में ये स्पीड अलाउड है. अगर वो ड्राइवर स्पीड बढ़ा देता है तो अपने आप से वो उसको वार्न करेगा अप टू 5 kmph. उसके बाद उससे भी ज्यादा बढ़ाता है तो वो ब्रेक लगा देगा. आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक वो जो प्रिस्क्राइब्ड स्पीड से अगर नीचे आ जाता है जब तो, आएगा हाँ, तो लेट अस यस इनिशियल प्रेजेंटेशन. ओके सर, may I go? This KAVACH in the engineering system, which is avoid the speed supervision, speed prevention, collision, all things, and this is based on total absolute location. Principle is absolute location. This gives the continuous speed supervision, means what speed loco pilot has to run the loco. This is continuous shown in this. This will come in the next slide, how it is showing. This display of aspect also come in the loco pilot, in front of the loco pilot.
किस स्पेसिफिकेशन में? Yes, sir. Yes. Signal aspect will be displayed in the cab. Yes, sir. Yes. वो एक फोटोग्राफ हम लोगों ने लगाया है इसमें कि आप वो DMI जो सामने ड्राइवर मशीन इंटरफेस जो सामने दिखेगा वो कैसा दिखेगा, दैट पिक्चर इज अवेलेबल इन द प्रेजेंटेशन। वो आप देखेंगे तो काफी कुछ क्लियर। बिल्कुल 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 वो है प्रेजेंटेशन में है। अभी वो आपको पिक्चर जब दिखाएंगे तो काफी कुछ चीजें क्लियर हो सभी जाएंगी। तो सर मैं कवर करूंगा। इट इज देयर। दिस इज द हाउ द कवच इंस्टॉलेशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस कि इस एक स्टेशन कास्ट होता है जो हर स्टेशन में लगेगा, प्लस IBS में भी लगाना पड़ सकता है। डिस्टेंस इज IBS इज मोर देन दिस, सर्टेन डिस्टेंस इज देयर, प्लस लोको में रहेगा, एंड ऑल द मूवमेंट इज मॉनिटर इन द NMS थ्रू NMS टू कंट्रोल रूम, मींस डिवीजन ऑफिस। दिस इज बेसिक एलिमेंट्स व्हिच आर टू बी इंस्टॉल्ड। व्हाट इज NMS? ये कवच सिस्टम का सर मैं ब्रीफली पार्ट बता देता हूँ। कवच सिस्टम के एक स्टेशन इक्विपमेंट है जिसको स्टेशनरी कवच बोलते हैं, लोको इक्विपमेंट है जिसको हम लोको कवच बोलते हैं। दो पार्ट है, इन दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए जो कम्युनिकेशन यूज हुआ है दैट इज UHF बेस्ड रेडियो कम्युनिकेशन। इसके थ्रू स्टेशन की इंफॉर्मेशन लोको को आती है, लोको की इंफॉर्मेशन स्टेशन को जाती है। बेस्ड अब कवच जहां लोको कवच जहां खड़ा है उसमें क्या है कि आपको पता करना होता है कि इंफॉर्मेशन की ये कहाँ खड़ा है। उसके लिए हम ट्रैक साइड इक्विपमेंट एक यूज किए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं RFID टैगिंग। RFID टैग ये ट्रैक पे केवल लगेगा, दिस इज ए पैसिव डिवाइस, वो स्लीपर पे लगेगा। उस RFID टैग से इंफॉर्मेशन लोको को आएगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये लोको कहाँ पे है। दीज आर द बेसिक फीचर्स, बेसिक स्कीमेटिक पार्ट ऑफ दिस कवच सिस्टम। डिटेल्स आ गया है। This is how the system works, principle of working. This is ATP system based on the electronic, this interlocking based, means all the information is gathered from the interlocking, and it is processed and compatible is set to through the HF to loco, means what is the signal position, what is the movement authority is given to this, all is compiled in the SNET cast. All the control is done by the SNET cast. Only loco process it and give the information, braking देना है braking देगा, speed देना है speed देना है, all things are processed in the this. लोको कवच में सर कोई भी इंफॉर्मेशन प्री स्टोर्ड नहीं है, ओनली कॉन्फ़िगरेशन फाइल छोड़ के ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड टू द यूजर, मींस कहीं का भी लोको आए देयर इज नो नीड टू स्टोर एनी इंफॉर्मेशन, उसको वही करेगा सर। बेसिकली जो कवच सिस्टम है वो आपके इंटरलॉकिंग को अफेक्ट नहीं करता है। आपका जो स्टेशन की इंटरलॉकिंग है एज इट इज रहेगी। Based on station interlocking, the information will be taken to station kavach, and that information, suppose the aspect of signal, हमको इंटरलॉकिंग में कोई चेंज करना है, जैसा है स्टेशन इंटरलॉकिंग दैट विल बी सेम एज इट इज। तो These are the features: prevention of speed, signal passing and danger, cab signaling, loop line speed control. Loop line speed control मतलब 15 kmph, double loop line is there 15 kmph, if single line is 30 kmph, whatever the value is set it. It is part of the configuration file in the station. And this is prevention of overspeed. Look, सर इसमें क्या होता है कि हम कॉन्फ़िगरेशन, हाँ सर मैं इसको बता रहा हूँ। सर मैं इसीलिए थोड़ा बीच में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज़ ही इज अ टेक्निकल पर्सन और आई हैव बीन इन डिवीजन, सो मुझे पता है कि आप लोग किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें ये है सबसे पहले ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले बेसिक मोटा सिस्टम क्या, बिकॉज नाउ यू आर वेल अवेयर कि कवच ये है, बट लेकिन जो अभी सब लोग हैं इनके लिए टोटली न्यू है। तो आपको उस एंगल से समझाना है कि एग्जैक्टली क्या सिस्टम है, बिल्कुल ब्रास ट्रैक्स। तो हाँ ठीक है सर, मैं इसको नेक्स्ट आऊंगा मैं। ये बेसिकली दीज आर द फीचर्स अवेलेबल इन कवच। उसमें आपका स्पैड प्रिवेंशन है, स्पैड होगा, कैब सिग्नलिंग है जो अभी डिस्कस हो रहा था कि आपको कैब में ही दिख जाएगा उसके लोगो एस्पेक्ट क्या है।
आगे अगर लूप लाइन पे जैसे आपका 15 kmph 30 kmph का स्पीड रिस्ट्रिक्शन होता है, तो वो चीजें आपका उसमें ही मेंशन करेगा और अकॉर्डिंगली स्पीड रिस्ट्रिक्शन उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप ओवर स्पीड कर रहे हैं तो एक प्रिस्क्राइब्ड स्पीड प्रोवाइडेड है वहां पे किसी भी सेक्शन के लिए, और अगर आप उससे ज्यादा स्पीड से चलाते हैं गाड़ी को तो वो अपने आप से ब्रेकिंग लगाएगा उसमें। तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ रोल बैक। सपोज गाड़ी खड़ी है आपकी और तो उस समय वो रोल बैक को प्रोटेक्शन करता है। और रिवर्स मूवमेंट के लिए भी, रिवर्स मूवमेंट के लिए इसमें जैसे 5 kmph तक का वो देखता है कि 5 kmph से ज्यादा जैसे ही हो रही है स्पीड रिवर्स में तो इट विल अप्लाई द ब्रेक। तो ये है प्रिवेंशन ऑफ साइड कोलिजन। साइड से कुछ अगर इशू होता है तो वो प्रिवेंट करता है। जो एक अभी जल्दी टेस्ट भी हुआ है, मंत्री जी ने किया था, प्रिवेंशन ऑफ हेड ऑन एंड रियर एंड कोलिजन, इसमें हेड ऑन उन्होंने किया था, हेड ऑन कोलिजन और रियर एंड कोलिजन करेगा। एलसी गेट पे ऑटोमेटिक वार्निंग होगी, जैसे ही गेट आएगा वो पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड स्पीड में जब रहेगा और प्रिस्क्राइब्ड डिस्टेंस पे वो अपने आप से हूटर बजाने लगेगा, एलसी गेट का हॉर्न बजाने लगेगा। एसओएस सर एक्चुअली जैसे एक डिस्टेंस रहेगा सर, मान लीजिए कोई एलसी गेट है, इंटरलॉक्ड एलसी गेट है विस्लिंग के लिए, हाँ एएलपी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप विस्लिंग करेगा उसमें। इसमें जो मंत्री जी ने कहा उसमें ये वाला भी एस्पेक्ट था उसमें। इसका एसओएस मैसेज जनरेट करेगा इफ देयर इज एनी इशू। ट्रेन लेंथ कंप्यूटेशन भी इसका पार्ट है। सर हाँ मैं बता रहा हूँ सर, एसओएस लोको पायलट भी जनरेट कर सकता है, स्टेशन भी जनरेट कर सकता है। Suppose he finds some emergency there, he press the SOS button, then all the 3 kilometer, all the loco will stop. अगर उसको कुछ पता चलता लोको है में प्रॉब्लम है, लोको पायलट also can generate the SOS button and all the loco 3 km 3 up to communication available means 3 kilometer. Save our soul. सर ऐसा है। सभी जितने भी 3 किलोमीटर के रेंज में जितने भी लोको होंगे, all the will get the information. अनसेफ कंडीशन लगी, yes sir, we can press that. yes sir. सर इसमें एक चीज कहने को है सर, सर एक क्वेश्चन। ये सर लोको में सर इसमें एक क्वेश्चन है सर, नॉर्मली एक स्विच की बात है सर, जैसे एक्चुअली जैसे मेमो में होता है। देयर इज वन रिक्वेस्ट, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वो क्या आप नोट कर, अदरवाइज क्या फ्लो में गड़बड़ हो जाएगा, फटाफट हम लोग नहीं एक जस्ट क्वेश्चन सुन तो लीजिए। ऐसे स्विच नहीं दबाया इन केस और ड्राइवर मान लो जैसे मेमो में क्या है डेड मैन हैंडल होता है तो अपने आप ट्रेन रुकती है, उस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए कुछ मेरे समझ से। मैं ये बोलता हूँ कि एसओएस जैसे कुछ इमरजेंसी अगर लोको पायलट मान लो बेहोश हो गया अकेला है तो फिर उस केस में कैसे रोकेगी? वो तो उसके लिए तो बनी है। नहीं वो तो है वो है कि यदि कहीं पे सिग्नल लाल आने वाला है और नहीं कोई एक्शन ले रहा है एलपी तो वो तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा ही। नहीं स्टेशन का जनरेट ये कह रहे हैं बेहोश हो गया, लोको पायलट बेहोश हो गया, नहीं वो उसी में आ जाएगा। चलो अभी आगे ये अपना फ्लैग करके रखो अपना पॉइंट, इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा ये शंटिंग लिमिट प्रिवेंशन ऑफ हो गया ये, और एसओएस मैसेजेस, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेन लेंथ इज देयर, आपकी ट्रेन लेंथ को कैलकुलेट करेगा वो। ये हर स्टेशन में करेगा सर, हर स्टेशन में हम आफ्टर एडवांस दिस शटल वी कीप द एटीबीटी प्रिंसिपल इज देयर एंड इफ द एनी सपोज सडन चेंज इन 25 मीटर मोर देन चेंज इज देयर सर 20 पर हर स्टेशन में करेगा, एक्चुअली इन बिटवीन मिड सेक्शन में नहीं कर सकता। हाँ ये शंट लिमिट वैलिडेशन करेगा, साथ में सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग थ्रू एनएमएस रहेगा। ये सर बीएसएलवी टू बीएसएलवी हम आरएफआई टैग लगाते हैं, इफ द लोको passes दैट सेट लिमिट इट विल अप्लाई द ईबी। जो शंटिंग अभी शंटिंग ब्लॉक से नहीं कर सकता सर, बट ओवरराइड करके बैक एंड ब्लॉक फॉरवर्ड वी आर ब्रिंगिंग इन नेक्स्ट वर्जन। इसमें एनएमएस सिस्टम भी रहेगा जो कि नॉर्मली सेंट्रलाइज प्लेस पे रहेगा, और उसके थ्रू आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट लाइक अभी डेटा लॉगर से आप इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, सिमिलरली वो एनएमएस रहेगा, और वो लाइव लोकेशन कहाँ क्या है सारी चीजें उसमें इंफॉर्मेशन एनएमएस में रहेगी, स्टोरेज रहेगी सर।
स्टोरेज रहेगी। उसके 3 तरीके के हैं उसमें, जैसे क्रिटिकल डेटा है तो उसके लिए अलग से प्रिस्क्राइब्ड है, नॉर्मल मेंटेनेंस डेटा है तो उसके लिए कितने दिन का रखना है, ऐसा करके बना हुआ है। सर मैं ये व्हाट आर द दिस इज द दिस इज वन दिस इज साइड दिस इज लोको ओके दिस इज लोको है। हाँ ये लोको है सर, इसमें LPOCIP लोको पायलट ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल 2 आर देयर, कैब 1 कैब 2 प्लस अलग अलग सर रहेगा। एंड दिस इज द कैब इनपुट इज टेकन फॉर द लोको कवच, दैट इज द योर ब्रेक पैरामीटर्स, कैब इनपुट पैरामीटर्स एंड अदर थिंग्स। ब्रेक इंटरफेस यूनिट, इसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि आपस में ना बात करें। लोकल अभी बाद में बात कर लेना, तो हाँ पहले ये सुन लो, नहीं तो वो डिस्टर्बेंस हो। एंड ब्रेक इंटरफेस यूनिट लगती है IRAB टाइप में, एंड CCB एंड UE70 ब्रेकिंग न्यू सिस्टम में दूसरा सिस्टम है सर। एंड RFID रीडर लगते हैं, 2 RFID रीडर लगे हुए हैं, वो रहते हैं रिडंडेंट, यदि एक RFID खराब हो गया दूसरा टेक ओवर करेगा, विद 1 RFID सफिशिएंट टू वर्क। हाँ सर BIU एक ही रहती है, हाँ एक ही होगी सर। ये RFID टैग जस्ट लाइक सर टिकास, लोको टिकास सिंगल इक्विपमेंट है, उसी तरीके से BIU भी सिंगल रहेगा। और DMI या OCIP LPOCIP दोनों एक ही चीज है। वो 2 रहते हैं कि डिस्प्ले के लिए एक कैब साइड में, जैसे 2 कैब है, दोनों कैब में वो डिस्प्ले करेगा और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन प्रेस करेगा बटन वो सर। एक्चुअली इट इज लोको, यस सर यस एक ही है। नो नहीं सिस्टम इज सिंगल सर, सिंगल से बट सर सिस्टम एक है, लेकिन इट इज कंप्लीट रिडंडेंट, इवन दो वाइटल कंप्यूटर आर 2 आर फिटेड, इट इज रिडंडेंट। RFID 2 आर देयर, UHF communication, UHF modem is 2, GSM are 2, GPS device also 2. Everything is duplicated to have the higher availability. This is the purpose. And GSM only for taking the key from the this management system and sending the critical message to NMS and the whoever configure for the particular things. Suppose loco pilot isolated it, immediate message will come who is configured in the this. Key loco pilot has configured. What is the issue? System failure is there, then also it come. Plus your GPS is there. GPS is only used for the time synchronization of the system network. This GSM 1, GSM 2, this both are there, and this is identical for the Stationary and onboard coverage. Both के लिए same system यूज हुआ है। स्टेशन में भी 2 GSM रहेंगे, लोको में भी 2 GSM रहेंगे, same duplicated is there in the station side and loco side. Plus your remote interface unit is used. अरे sorry हाँ सर ये वो आगे में है। इसमें बेसिकली एक चीज बताना चाहूंगा, जो RFID टैग दिखा रहा है ये आपका ट्रैक पे लगा हुआ है। RFID टैग, दिस इज ए पैसिव डिवाइस, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होगी, लोकेशन रहेगा, कहाँ का लगा, किस स्टेशन का है, उसके बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन RFID रीडर रीड करेगा। जब उसके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी तो जब रीड करेगा तो वो उसे पता चल जाएगा इस लोकेशन पे लोको खड़ा है। बेस्ड ऑन दैट वो उसके बाद प्रोसेसिंग शुरू होगी, उसके लिए लोको टिकास दिया हुआ है। जब प्रोसेसिंग होगी तो इन्फॉर्मेशन विल बी सेंड फ्रॉम लोको टिकास टू स्टेशन टिकास वाया UHF, जो आपका दिखा रहे हैं यहाँ पे वाया UHF जाएगा आप इसमें स्टेशनरी टिकास में, और स्टेशनरी टिकास से प्रोसेसिंग होगी। जो डेटा वहां जैसे कि सिग्नल का एस्पेक्ट है, ये सब चीजें हैं, इसका पैकेट जो भी होगा वो वाया UHF आएगा लोको टिकास के पास में। तो ये कम्युनिकेशन सेटअप होगा फुल डुप्लेक्स मोड में, और दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगेंगे और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, और दूसरा बताएगा कि सिग्नल का एस्पेक्ट ये है। ये सब चीजें कम्युनिकेशन जब होगी तो दोनों एक दूसरे जैसा एस्पेक्ट रहेगा उसके हिसाब से बिहेव करेगा। नेक्स्ट इसमें सर की मैनेजमेंट सिस्टम में दिस इज रिक्वायर्ड ओनली 1 इन इंडिया। इट इज ऑलरेडी ऑडियो कंट्रोल है, एंड आपको केवल क्या करना है, केएमएस में सिम नंबर एंड स्टेशन आईडी हम रजिस्टर करेंगे, ऑडियो रजिस्टर करेगा। एंड आई विल गिव द फ्यूचर कि हाउ इट इज प्लान्ड।
because it is a unique of the station ID, loco ID plus is a unique number. So already I have given 10 one issued. हाँ, yes, so how वो it is zone done, wise that is I will decided है. do. हाँ हाँ सर, तो बिकॉज दिस ही नोज की हमको लोको जब आता है किसी स्टेशन में तो रजिस्टर होता है, इट गेट द रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के लिए हम यूचअप कम्युनिकेशन में जा रहे हैं, इट शुड बी सिल 4. सिल 4 के लिए मतलब क्या है कि ऑल द मैसेज आर एन्क्रिप्टेड विद की टू नॉट टू हैक एनीबडी. कोई आदमी हैक नहीं कर सकता, इसलिए उसको क्या है एक की से साथ इनक्रिप्ट करते हैं. वही की स्टेशन पास होती है, ही नोज की ये की हमारी है. स्टेशन 1 मैसेज करता है, ही विल टेल कि आपको इस फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके इस This ये is हमारा स्लॉट है. a security feature provided for communication between station TCAS and loco TCAS. और इसका एक ही सर्वर है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया क्योंकि साउथ सेंट्रल में कमीशन हुआ, तो बेस्ड ऑन दैट तो उसमें आप लोग की रिक्वायरमेंट अभी नया KMS लेने की नहीं है, बस वो सिम लेंगे आप, और सिम को जो सिम आपको मिलेगा वो रजिस्टर करा लेना है KMS में. ये बाद में भी वो आरडीएसओ करेगा सर. वो आरडीएसओ को आप भेज देंगे लिस्ट. सर्वर एक ही जगह रहेगा? हाँ सर. क्या डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेशन वी आर प्लानिंग इन गाजियाबाद. एक और प्लान हो रहा है गाजियाबाद ऑलरेडी. जियो पोजीशनिंग आई एम डूइंग सर. लोको की भी आईडी फिक्स हो जाएगी. लोको आईडी ऑलरेडी यूनिक, लोको नंबर इज यूनिक सर. यूनिक हो जाएगा ना. लोको नंबर इज यूनिक, बट स्टेशन वी डोंट हैव द यूनिक नंबर, so we have defined the unique number. I will tell how to define it. लेकिन ट्रेन नंबर को डिफाइन करने का तो होगा ना कि कौन से. No, train number will not display. That is the separate part, NMS part. आगे होगा तो नहीं सर, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा. ये हमारा एक स्टेशन में कैसे एंटेना लगाना, इसको देखने से काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी सर कि किस टाइप का दिखता है. और जैसे आपका इंटरलॉकिंग सिस्टम से स्टेशन कवच कनेक्टेड है, स्टेशन कवच से ही SMOC जो लिखा हुआ वो स्टेशन मास्टर के सामने में रहेगा. सामने स्टेशन मास्टर सामने रहेगा SMOC आईपी. और ये रेडियो यूनिट है, वो रेडियो यूनिट से ट्रांसमिट होगा स्टेशन एंटीना को, और ये रिले रैक है, ये स्टेशन कवच का पार्ट है. ये सर वाइटल कंप्यूटर जो लोको में लगेगा, स्टेशन में लगेगा, ऑलमोस्ट सेम है, बट ये स्टेशन कवच का दिखाया हुआ है, एक मेधा का जिस तरीके का है उसका. क्योंकि हम यहाँ पे PI से करते हैं सर, इसलिए हमको इनपुट कार्ड लगाने हैं. जहां PI होगा ऑटोमेटिक दिस कार्ड आल्सो नॉट रिक्वायर्ड, ओनली वन कार्ड इज रिक्वायर्ड एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा. यस सर. यस सर. दिस इज नहीं रहेगा, नहीं केवल SMOC रहेगा स्टेशन मास्टर के पास. और ये रिले रूम का पार्ट है, ये रिले रूम का पार्ट. ये सर व्हाट आर द कार्ड ऑफ द स्टेशन एंड लोको. दिस इज स्टेशन वाइटल कंप्यूटर. इट्स एन इनपुट कार्ड व्हिच इज फॉर द कनेक्टिंग द PI सिस्टम. PI इनपुट्स मींस और ऑन ECR, NWKR, RWKR and berthing track. These all things. A communication interface, this is the communication with the your other system, means radio modem, remote interface unit. These all things are communicating. Event logger, it is logging the events. All the events are logged here. This is line modem का communication and operation communication and power supply model. Nothing else. ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ सर. अच्छा, इसी टिकास में हमारे सर रेडियो, GPS, GSM, RFID टैग, एंड लोको में रेडियो, GPS, GSM, RFID रीडर एंड क्वाड्रेचर टाइप स्पीड सेंसर. दे आर डुप्लीकेट मैनर सर. दो हम स्पीड सेंसर लगाते हैं, दोनों की स्पीड मॉनिटर करते हैं. सपोज द वन स्पीड सेंसर इज गेटिंग फॉल्टी ड्यू टू एनी रीजन, दे ऑलवेज डू द कंपैरिजन. मींस स्पीड सेंसर 1 and speed sensor 2, how much kmph difference is there. If the kmph difference is increasing more than 5 kmph, then automatic system will declare this is faulty and apply system go in the fault mode. Means because the absolute location is increased, system fault mode, system failure mode. Yes sir. No. If loco nahi, problem is there, he will warn it and it will apply the brake. If loco pilot acknowledge it, he has to acknowledgement option है वहाँ पे, acknowledge कर लेंगे तो फिर लेकिन इसको फिर आइसोलेट नहीं इसके बाद आइसोलेट करना है सर. आइसोलेशन ऑप्शन है, आइसोलेट कर दीजिए तो फिर उसके बाद जो टिका सिस्टम है वो. हाँ सर.
This is coming very rarely, ऐसा नहीं है सर। वैसे रिडंडेंसी रखी हुई है इन केस हम फेलियर आकाश की वो दोनों ही फेल हो गया, वैसे चांसेस कम है, बट वो ऑप्शन रखना जरूरी है, ऐसा ना हो कि रिडंडेंसी है सर उसकी। अच्छा नहीं नहीं सर, इट इज लूप नहीं है, जीपीएस नहीं है, जीपीएस अच्छा जीपीएस अच्छा नहीं नहीं सर ये हमारा ऐसा मुझे पे लगेगा, इसमें हेल्दीनेस ऑफ द स्टेटिकास विल शो करेगा, हेल्थ ओके है कि नॉट ओके है, ऑल थिंग्स है, एंड एसोसिएशन बटन है, इफ ही जनरेटिंग द एसओएस counter will be there, it will be incremented by 1 because he generated the what is the reason he need to record it. नहीं यदि उसने जनरेट किया है सर एसओएस तो ये जनरेटेड व्हाट फॉर, so we have to keep the on counter, to counter will be increased once he has pressed 1 जस्ट लाइक सर पैनल में जैसे इमरजेंसी कुछ भी ऑपरेशन करते हैं तो इमरजेंसी काउंटर्स लगे रहते हैं, एटलीस्ट ही शुड नो उसी तरीके से। नहीं health okay, health fail, suppose the station task KAVACH is unhealthy, then it will go to fail. Just for information to this is station information master, because the whatever the maximum we provide and all the CRC also will come in here only, this display panel. this है वो इसमें बैटरी भी लगती है, वो अपना this input supplies का input supply को हम सेंस करते हैं कि suppose it is getting more less than some 16 volt, नहीं STCAS में जो सप्लाई आ रहा है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ड्यू टू एनी रीजन सप्लाई इज गेटिंग डाउन। नहीं सर इसकी सप्लाई 110 वोल्ट से हम एसएमपीएस लगाते हैं, बेसिकली स्टेशन टिकास को चलाने के लिए जो पावर सप्लाई चाहिए सर, हाँ। वो 110 वोल्ट डीसी देते हैं, तो वो अगर वोल्टेज या बैटरी लो हो गई है तो इस वजह से, बिकॉज द सेम टेकन फ्रॉम बैटरी बैंक। दिस इज द सर रेडियो इंटरफेस के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी अभी पहले फ्रीक्वेंसी थी 416 टू 406 टू 470 मेगाहर्ट्ज, नाउ इट हैज डब्ल्यूपीसी हैज अलॉटेड अस 425 टू 430 मेगाहर्ट्ज and we have done trial. Free band nahi hai sir, it is and but the WPC is giving the authorization for the, I will show the frequency, correct frequency इनिशियल दूसरी फ्रीक्वेंसी थी सर, रेलवे अभी कुछ WPC ने बोला कि शायद दे आर अनेबल टू गिव दैट फ्रीक्वेंसी रेंज, सो उन्होंने 425 से 430 मेगाहर्ट्ज के बीच की यूएचएफ फ्रीक्वेंसी दी। बेस्ड ऑन दैट हम लोगों ने ट्रायल किया ले जाके जहां अभी लगाया ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में, और देखा गया कि परफॉर्मेंस वाज बेटर देन द प्रीवियस वन, तो उसके बाद से यही फ्रीक्वेंसी अब यूज करने का रिकमेंडेशन हो रहा है। वो फ्रीक्वेंसी जो स्पेसिफिकेशन मेंशन थी 406 टू 416 450 रेंज के उसी रेंज के बीच का ही है ये, बस वो शॉर्टर कर दिया थोड़ा। ये सर ये हमारा रेडियो मॉडेम जो कैलैम्प का यूज हुआ है सर, this is also two numbers sir, redundant, suppose one radio modem fail, automatically single radio modem work continuously, otherwise both are transmitting alternate cycle, means one will send and second will send, to have the monitoring of the both the radio modem, and if the failure is there it will message come to NMS, it means one radio modem has failed. This is GPS device also, two are there and they are time especially used for time synchronization, no other purpose. This whatever the interlocking input we are interfacing with the this TICAS system, then this is the only aspect ECRs, berthing track, point indication, only three things we are taking. ट्रैक से बर्थिंग ट्रैक का केवल लेते हैं सर, कि सपोज सम इज स्टैंडिंग वी हैव a secondary provision of protecting. नहीं sir, this is correct, actually we have taken the second stage, suppose some loco is something is there and the point indication wrong, even though system will apply the brake and it will stop, it will prevent the hazards. This normally this is depend upon inputs number of the firm to firm, it is changing, somewhere 32 and 24 is the minimum.
This already we have employed the two independent channel double cutting mechanism to same signaling principle we have gone. This is the fail safe input read back, means whatever the output we are giving, that is the reading back also. Yeah. मीन्स रीड बैक सर, सिस्टम रीड बैक कि हमने जो दिया है वो सही दिया कि नहीं दिया है. जस्ट लाइक EI में भी रीड बैक होता है सर. सेम प्रिंसिपल, वी अप्लाइड द सेम प्रिंसिपल बिकॉज दिस इज आल्सो सेम Salesforce system and we have to go in same person. This is the onboard KAVACH. Onboard KAVACH having the input card is index number because their input is required more. Here digital output card is there, which give the commands all things to BIU and anything, and power supply. This is same as it is station. Only software change for the Senetica software is separate, executive software is separate, and local software is separate. जिसको भी यार मोबाइल पे बात करनी, बाहर जाके बात करनी. ओके सर, ये ऑलरेडी कवर कर दिया मैं. हाँ, अब नाउ विल गो टू दिस इज द लोको पायलट. इन फ्रंट ऑफ द लोको पायलट जो रहेगा ये चीज रहेगी सर. हाँ, मैं एक मिनट, ये सर आपका सिग्नल है. दिस इज सिग्नल एंड हाउ व्हाट इज द लोको पोजीशन is showing the 787. This meter ahead signal is post is there. Means लोको से सिग्नल के डिस्टेंस अभी एट प्रेजेंट जब ये पिक्चर ली गई है उस समय 787 मीटर थी, वो शो कर रहा है. नहीं सर, येलो सिग्नल है सर. अप्रोचिंग सिग्नल इज फ्रॉम द माय पोजीशन, मींस लोको पोजीशन इज 787 मीटर जो प्रेजेंट, एंड दिस इज डिक्रीमेंटल वंस लोको मूव फॉरवर्ड. हाँ सर, इसमें एक दोनों वही है सर. हाँ, येलो सिग्नल. हाँ सर. हाँ सर. सर इसमें एक चीज और, इसमें आप देखेंगे कि रूट सर, ये सर वो वैरी करता है. 787 जो लिखा है. हाँ सर. चेंज द एस्पेक्ट. इट टेक 2 सेकंड्स. 2 सेकंड. अभी मैं बताऊंगा सर कि हाउ द कम्युनिकेशन इज डन. इसमें जो DMI में देख रहे हैं सर, रूट इंडिकेटर भी शो कर रहा है. एक्चुअली आप देखेंगे इसमें साइड में जो टारगेट डिस्टेंस है और नीचे में फ्लैश कर रहा है टर्न आउट इन 827 मीटर विद स्पीड लिमिट 30 km. ये आगे एक टर्न आउट आने वाला है, इसका मतलब है कि ये लूप लाइन में गाड़ी लेने वाला है, इसलिए वो जो आगे का टारगेट डिस्टेंस है वो शो कर रहा है इसमें. साथ में टर्न आउट दिखा रहा है कितने दूर पे टर्न आउट है. तो होम सिग्नल 787 मीटर, उसके बाद 827 मीटर पे आपको पॉइंट मिलेगा. पॉइंट का फेसिंग मतलब दिस इज अ फेसिंग पॉइंट जहां आपको स्पीड 30 kmph होनी चाहिए. आप देखेंगे अभी 80-90 kmph तक में अभी अलाउ कर रहा है. जैसे जैसे आप अप्रोच करेंगे सिग्नल की तरफ और उसके हिसाब से वो जो उसकी स्पीड होगी वो वेरी करेगी और जो 190 दिखा रहा है वो घटता चला जाएगा. और जैसे ही आप 827 मीटर दूर जो पॉइंट है, पॉइंट के पास में पहुंचेंगे तो एज 30 kmph की स्पीड लिमिट है तो वो 30 kmph से ज्यादा जाने नहीं देगा. ये जो डार्क ग्रीन है दिस इज द टारगेट स्पीड, राइट? यस सर, करेक्ट सर. और ये ब्लू में क्या है जो ब्लू में शो कर रहा है? ये ब्लू में सर मूवमेंट अथॉरिटी है. कहाँ तक मूवमेंट अथॉरिटी कहाँ तक दी हुई है, कहाँ तक आप मैक्सिमम मूव कर सकते हैं. इसमें जैसे सर दिखा रहा है 01 इसमें 1607 मीटर है. इट मींस कि आपका यस सर, मैं बता रहा हूँ. वो जैसे 827 मीटर पे पॉइंट पड़ेगा, लूप लाइन में गाड़ी घुसेगी, बर्थिंग ट्रैक क्रॉस करेगी और स्टार्टर सिग्नल पे अगर वो रेड होगा तो स्टार्टर सिग्नल पे रुकेगी. दैट मींस कि ये स्टार्टर, हाँ मतलब ये स्टार्टर तक है इसकी अथॉरिटी है एंड स्टार्टर इज रेड, दैट मींस. यस सर. एक्चुअली सर जो स्टेटिकास है ही नोज ऑल द इंफॉर्मेशन, लेकिन हम लोको पायलट को करंट सिग्नल अप्रोचिंग सिग्नल ही शो करेंगे. वंस ही चेंज द सिग्नल इट डिस्प्ले 6 सेकंड के लिए डिस्प्ले कुछ नहीं होगा, अगेन ही विल करंट सिग्नल शो करेगा लगेगा. वी हैव गिवन गैप टू डिस्टिंग्विश जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन 6 सेकंड सर. जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से भी सर वो ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएगा. तो हाँ, अभी इंटीग्रेशन की बात चल रही है. जैसे अभी क्या हो रहा है कि यस ये चल रहा है ऑलरेडी, इस पे कुछ काम चल रहा है सर.
इसमें सर ये RFID, ये लोको पायलट की जरूरत नहीं है, हम टैग की जरूरत नहीं है। इस सपोर्ट कोई टैग मिस हो गया तो रेड आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन की जगह रेड आ जाएगा, टैग यहाँ पे टैग तो RFID टैग्स हैं वो रेड आ जाएगा। आपको एंड दिस मैसेज कन्वे टू NMS टू कंसर्न अथॉरिटी कि आपका RFID टैग मिस है, समथिंग इज रॉन्ग। मतलब कि यदि कंटिन्यूअस दो लोग हो गए एंड मिस हो रहा है, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, मीन आइदर टैग डैमेज्ड और इट इज somebody has stolen or something is there, तो वी कैन कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, एक दो सर, 2 मिस में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, बिकॉज़ अर्ली वार्निंग। इसमें सर और कुछ भी दिया हुआ है, जैसे आप TL 25 मीटर लिखा हुआ है, ये TL इज अ ट्रेन लेंथ, ट्रेन लेंथ, ये लोको केवल है, इसलिए इसका TL 25 मीटर दिखा रहा है। और ये फुल सुपरविजन तो ठीक है। फुल सुपरविजन मींस सर मैं अभी इनको मोड़ जाऊंगा सर। अच्छा, एक्चुअली क्या है, व्हाट इज DC? DC इज द डिसिलिन वैल्यू। हाँ सर, मैं आपको मैं बता एक्चुअली आना है सर, मैं ब्रेक पावर कम है ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द मिशन, मीन्स जब लोको स्टार्ट करेंगे टिकास को करेंगे तो ही विल चेक द MR प्रेशर, BP प्रेशर, BC प्रेशर, ऑल थिंग्स ही विल अप्लाई द EB, NB, FSB, ऑल द 3 ब्रेक अप्लाई करेगा, चेक करेगा, इट इज करेक्ट। बट इट इज इफ द मैकेनिकल फॉल्ट इज देयर देन इट इज नॉट पॉसिबल। ओनली हां गाड़ी तो देखो 100% पे चल रही है, ठीक है। हाँ हाँ, 50% है तब भी तो गाड़ी तो चला ही देते हैं। इफ सर MR करेगा उस हिसाब से सर नहीं सर, मैं बता रहा हूँ MR हैज टू बी 7.5 मींस 7.5 kg होना ही चाहिए। इफ इट इज लेस इट विल गो इन फॉल्ट मोड, इट विल नॉट स्विच ऑन। नहीं दैट sir that is there, manual braking system is there, MBT, I will go one by one। नहीं सर, MR प्रेशर हैज टू बी 7.5 kg, इफ इट नॉट देयर मींस सिस्टम वाले नहीं सर जो पूछे हैं MBT एंड दिस मैनुअल ब्रेक टेस्ट, जैसे वो लेवल ग्रेडियंट में जाते हैं नहीं, अल्टीमेटली जो उसमें डिस्टेंस शो कर रहा है, जो कंट्रोल करेगा, हाँ, वो कंट्रोल करेगा विद दिस अजम्पशन कि फुल ब्रेक पावर है, ठीक है ना। तो उसमें जब इतना डिस्टेंस पहुंचा तो उसने ब्रेक लगाना शुरू किया। नाउ सिचुएशन इज कि 50% ब्रेक पावर है, तो वो कैलकुलेशन सारी चीज गलत हो गई कि उसने, हाँ सर, तो क्या वो चीज, वो सिचुएशन कहीं अकाउंटेड फॉर है? हाँ नहीं सर, मैं हो सकता है, मेरे पास है, सॉरी सर, हो सकता है सर। नहीं, जैसे लास्ट वीक में वी हैड वन सिचुएशन कि जिसमें एक ट्रेन चली, गुड्स ट्रेन थी, जो कि भौरा से चली, और उसमें बताया कि साहब वो आगे उसने ड्राइवर ने रिपोर्ट किया कि केवल मतलब उसमें 30 वैगन्स में ब्रेक नहीं लग रहे हैं और वो इमरजेंसी ब्रेक मारते हुए आ रहा है। ये सिचुएशन तो रियल लाइफ में कभी भी आ सकती है। सर ऐसी सिचुएशन में इसमें ऑप्शन है कि टीकास को बाईपास कर सकें, वो ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है, जब चाहेंगे तभी कर सकते हैं। ये हम लोग दूसरी चीज पूछ रहे हैं कि एक सिचुएशन डेवलप हुई, इन दैट सिचुएशन will it cause SPAD or it can cause a rear end collision then? उसके बावजूद भी स्पैड होगा क्या? हाँ, स्पैड सर, he will apply the EB if the brake power is less and he apply the brake, EB लगाएगा। If the target distance is decreasing and he is not available to apply, if first he will apply the FSB is seeing the speed not going, he will apply the EB without any intervention of loco pilot. Means he will try to stop that. Because he save sir, no अपने से चेक करता है, not required sir, this is not required। आपको केवल ये सेलेक्ट करना होता है कि टाइप ऑफ, मतलब लोको है कि उसके साथ में लोड है, वो ऑप्शंस रहते हैं, और साथ में वो ब्रेक पावर टेस्ट करता है इनिशियली स्टार्ट ऑफ लोड। हाँ सर, issue sir recently has come, that is the
सर अभी तक स्पेड नहीं हुआ है, केवल न्यू लोको में एक HHP लोको था, उसमें हुआ क्या कि ट्रैक्शन इज नॉट कटिंग ऑफ, आवर सिस्टम कट ऑफ द ट्रैक्शन आल्सो, ट्रैक्शन इज नॉट कटिंग ऑफ, देन इट हैज क्रॉस्ड द लोको even though he applied the EB and it is stopped about 62 meters, and now because that was a new loco, we have not trial for that, so first time trial it has crossed the speed. Only one case is happened, sir. नहीं सर, नहीं ब्रेक आउट नहीं होता, हमने सर स्पीड कैंपेज बताया था, स्पीड सेंसर 1 एंड स्पीड सेंसर 2 डिफरेंस। नहीं ब्रेक पावर का नहीं सर, ब्रेक पावर नहीं, मैं सर हाँ वो कह रहे हैं सर, ये क्या स्टार्ट ऑफ मिशन में इट चेक द MR प्रेशर, BP प्रेशर, BC प्रेशर। एक मिनट आपस में डिस्कस मत करिए, आपको पूछना है तो पूछिए। 7.5 kg supposed to be MR pressure, it has to be 7.5 and above, it then system go in the normal mode, otherwise it will declare it is faulty। हाँ तो नहीं, सिस्टम नहीं ऑन होगा सर, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। नहीं सर, तो एक्चुअली देन लोको हैज टू बी चेक्ड बाय द डिपार्टमेंट एंड चेक करते हैं, सिस्टम आइसोलेट करो आप ले जाओ, दैट इज द प्योर, बट आवर सिस्टम इज, एंड आई विल टेल द एक्चुअली इन दिस सिस्टम सर्टेन मोड आर सिलेक्टेड बाय द लोको पायलट, सर्टेन मोड। इसका पर्पस भी सर यही है कि जो प्रॉब्लम आ रही है कि आपका ब्रेक पावर कम है, अगर ये स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा तो शायद ये इशू आएगा भी नहीं, धीरे धीरे करके शुरू में प्रॉब्लम आएगी हो सकता है, बट धीरे धीरे दैट प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड। अभी होता है सर इसलिए क्योंकि सबको पता है कि अगर ये इशू आएगा भी तो ड्राइवर विल टेक केयर, वो इस टाइप का प्रेशर अप्लाई। वही एक अलग से क्वेश्चन हम लोग बाद में भी पूछ सकते हैं। सपोज आपने आइसोलेट कर दिया, ठीक, तो इसका तो अब ये कंट्रोल नहीं कर रहा, बट मान लीजिए वो आगे क्रॉस कर गया या सिग्नल क्रॉस कर गया, तो कोई दूसरी ट्रेन उस ट्रैक पे या डिरेल हो गया, तो वो कोई कोलिजन ना हो क्या, उसका मतलब कुछ और सिस्टम वो रीड करता रहेगा? नो GSM या कुछ फंक्शन नहीं, नथिंग सर, वंस इट इज आइसोलेटेड इट इज द टोटल लोको पायलट। प्लीज सर, आइसोलेटेड होने के बाद वो जस्ट लाइक ए नॉन कवच इक्विप्ड हो गया। नॉन टिकास ट्रेन है, नहीं नॉन टिकास ट्रेन है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है तो जो अदर ट्रेन्स हैं वो तो वर्क करना चाहिए ना, टिकास वाला। नहीं सर, कवच 2 इधर से वो स्पैड करके आगे बढ़ गया, और लेकिन उधर का जो सिग्नल था वो तो ऑन हो जाएगा ना, उस हिसाब से तो सिग्नलिंग सिस्टम विल वर्क एज इट इज सर, जैसे काम कर रहा है, क्योंकि सिग्नलिंग सिस्टम से उल्टा नहीं है सर, मतलब ऐसा नहीं है कि कवच में प्रॉब्लम है तो सिग्नलिंग सिस्टम में कोई असर पड़ेगा, वो इंटैक्ट रहेगा। मतलब ये है कि जैसे जो हेड ऑन कोलिजन का टेस्ट किया गया, यस सर, मतलब उसने उसको रोक दिया, मतलब जो पहला वाला है, मतलब दोनों को उसने, दोनों में ब्रेक लगे। ना एक ट्रेन में अगर टीकास फंक्शनल नहीं है, ठीक है ना, मतलब एक ट्रेन उसको सिग्नल दिया, इट हैज एंटर्ड इनटू द ब्लॉक सेक्शन, जो जिसका टीकास फेल हो गया है वो उसने दूसरी साइड से, मान लो सिंगल लाइन सेक्शन, उसने स्पैड कर दिया और सीधा घुस गई, तो क्या मतलब जो टीकास जिसका फंक्शनल है विल इट स्टॉप? इसमें सिर्फ 2 पार्ट है, मैं कहूंगा आइसोलेशन एक है, दूसरा है SR मोड है, इसमें मोड्स हैं बहुत। SR इज स्टाफ रिस्पॉन्सिबल मोड, इसमें क्या है कि सिस्टम ऑन है बट वो स्टाफ रिस्पॉन्सिबल मोड पे, जिसकी स्टाफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो गाड़ी को लेके जा रहा है। इफ इट इज इन स्टाफ रिस्पॉन्सिबल मोड और उसका डायरेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है तो हेड ऑन कोलिजन, रियर एंड कोलिजन काम करेगा। लेकिन इफ इट इज आइसोलेटेड मोड मतलब कि आपका एक तरीके से कवच उसमें लगा ही नहीं है, उस तरीके से ट्रीट करेगा, देन इट विल नॉट वर्क। इसके 2 पार्ट हैं सर। बताया था कि अगर ट्रैक पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो डिटेक्ट वो कवच टू कवच। इसमें सर DRM साहब जो पूछ रहे हैं, मेरा जैसे सपोज लेट मी इमेजिनरी सिचुएशन कि जो कवच वाली ट्रेन है, इट हैज एंटर्ड इनटू ब्लॉक सेक्शन, नॉन कवच वाली जो ट्रेन है
उसने अपोजिट साइड से स्पैड किया, उसके बाद वो रुक गई, ठीक है ना। तो नाउ इट इज एज गुड एज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द ट्रैक। विल इट नाउ जो जिस ट्रेन में कवच फंक्शनल है, क्या उसको एज ऑब्स्ट्रक्शन मान के कुछ रिएक्ट करेगा कि नहीं? नहीं सर, एक्चुअली जो कवच फीचर है उसमें आप जो बात बोल रहे हैं सर कि अगर कोई कवच रिलेटेड लोको है, उसके सामने कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, चाहे इवन जैसे एलसी गेट पे बहुत बार होता है कि कोई आपका व्हीकल आ गई, वो इसमें कवर नहीं है, बिकॉज ये तभी काम करता है जब दोनों सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इवन ब्लॉक सेक्शन में भी जैसे मैंने बताया कि एसआर मोड में है, कम्युनिकेशन फेल हो गया है, तो भी वो होगा क्योंकि दोनों कवच एक ऐसी फ्रीक्वेंसीज में रखी हुई है कि ब्लॉक सेक्शन में वो एक दूसरे से भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। इफ दैट कम्युनिकेशन इज नॉट वर्किंग, तो दूसरे को तो पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे है। हमें तो किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना ही है, तभी तो पता चलेगा कि वहां है सामने। और जो दूसरा इक्विपमेंट है, चाहे वो कोई रोड व्हीकल हो या कोई भी व्हीकल हो, वो इसके लिए सामने है ही नहीं, बिकॉज कोई कम्युनिकेशन तो उससे हो नहीं रहा है। कैमरा या इस टाइप के फीचर नहीं है। ये जो आप सर बता रहे हैं, ये एक टेस्टिंग ऑलरेडी चल रही है, आई थिंक मोटिव पावर डायरेक्टरेट से एनएफआर में, जिसमें ऑब्जेक्ट या कोई जो हाथी बीच में आ जाता है, उसको लेके प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है। वो एक सेपरेट है, उसमें आईआर कैमरास और ये सब यूज कर रहे हैं। दैट इज अ सेपरेट इशू, बट दैट इज नॉट कवर्ड इन दिस। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो सर ने बोला है कि मान लीजिए दो ट्रेन आ रही है, एक अप डाउन और एक डाउन से, दोनों 160 पे चल रही है, एक डिरेल हो जाती है और उसका एमीटर जो ट्रांसमीटर है ये डैमेज हो जाते हैं, तब क्या होगा? उसमें कवच में कुछ सुरक्षा है कि दूसरी वाली ट्रेन इस डिरेल ट्रेन, खन्ना एक्सीडेंट आपको याद होगा शायद 96 में हुआ था, तो उस केस में क्या होता है कि वो डिरेल होकर दूसरे ट्रैक में गिरी है, तो वो वाली ट्रेन रुक जाएगी क्या? सर यदि सिस्टम सही है तो करेगा, रुकेगा, बिकॉज द एक्चुअली आप पहले कंसेप्ट समझिए। दो तीन पार्ट सर, हम क्या करते हैं, जब हमारे स्टेशन ब्लॉक सेक्शन में लोको होते हैं तो लोको टू लोको कम्युनिकेशन करते हैं। बोथ लोको आर ट्रांसमिटिंग आईडी प्लस एब्सोल्यूट लोकेशन प्लस डायरेक्शन टू ऑटोमेटिक ओपन एयर, and the next loco receive, he is thinking that this loco is standing and speed, what speed it is coming, everything is detecting. Then this is the principle applied. Means suppose some loco has stopped, means there is something happen, even though nothing is happened, he is stopped, then other loco also will नहीं, बट उसका सिस्टम ही टूट नहीं, डैमेज हो गया। नहीं, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन 3 किलोमीटर का रखा हुआ है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे आपको ब्रेक लगाने का। दैट मींस कि इवन इफ अप लाइन पे लोको फेल हुआ, हाँ, वो रुक गया, हाँ, इवन देन डाउन लाइन की ट्रेन रुक जाएगी, हाँ रुकेगी, इवन इफ नहीं सर, यदि या तो वो एसओएस वो एक्नॉलेज कर लेगा, नहीं, he has to acknowledge it, एक्नॉलेज करेगा, बट ट्रेन मूव कर जाएगी। एक्नॉलेज करने के बाद जीरो स्पीड आएगी, देन ही परमिटेड द स्पीड ऑफ 30 km, फिर वो लोकेशन तक जाएगा। वो इस पर्पस से ही रखा हुआ है कि यही जो बता रहे हैं एग्जांपल, कि मान लीजिए वो दूसरे साइड में आ गया। मतलब मैं तो कोलेटरल डैमेज की तरफ से देख रहा हूँ कि वो तो डेली कोई ना कोई लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है। सर मैं आपको सपोर्ट बता रहा हूं। यस सर, नो isolated means isolated. Sir, I will go the mode. What is the mode? Actually, नहीं, इसी में कर देता हूँ सर। Sir, actually, some of the mode are selected by the loco pilot. Some of the mode automatic transition based on the availability from the information from the station because that is the SR mode. Once this, I will go one by one. This SR mode, once loco is start of mission is switched on, then SR mode can be selected. First, he will select the configuration. Configuration means he will all the parameter of the brake, everything is checked by the loco. What is the, how many coach are there? That I will show later how many selection are there, and then he will select the SR mode. Then he, after SR mode selection, he had to move the train. Then he has to actually to start communication. Loco has to cross the 2 RFID tag. Means he had to get the direction. It is nominal direction or reverse direction. Once direction is found, he will information every 2 seconds is sent to station. Station check that it is which route is, which direction is there, and then based on the interlocking inputs, it give the movement authority. You have your route is this and signal is this. All things information is given. How much
distance you can go, what is the speed, everything is good. Give. After this, if suppose SR mode is, it will come to limited LS mode, limited supervision mode automatically. If he has got the MA, movement authority, then he will get this. There are two patterns are there. MA is there and track profile is there. Track profile concern of the PSR, gradient, loop line turnouts, all things are there. PSR, this all things will be covered in the SSP. He will send the message for SSP to loco, means he has to what is gradient, because the brake system changing the gradient is there, then he has to apply the separate DC value will change. All things are changing. TSR अभी 4.0 में आ जाएगा 4.0 में सर 4.0 में आ जाएगा. It is there and I will later on I have covered it. No, एक ही बार Sir, PSR is the part of the SNTCAS configuration file. TSR is dynamic, that is fed through the division, and PSR is the station. We during the configuration file we will put it. If change is there, then we have to change it. Sir, इसके बाद में आपका है post trip mode. I will go. Post trip mode is there. When suppose some loco pilot has tripped due to any. बताइए सर. हाँ. हाँ. Sir, presently has to be because the two type of train running. One is the your loco kavach. एक कवच equipped रहेगा, एक non कवच equipped है सर. But once we come, we have got this is correct 100% running. After 2, 3, 4 years, we will. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is the. Yes, sir. सर आइसोलेट वाली कंडीशन भी तो है ही है. आइसोलेट वाली कंडीशन नहीं and next sir वो feature add हो very सकता soon है. it is coming in the display through the this network. It will come. Sir, इसमें एक reverse mode है. If pilot want to reverse it, he can select the reverse mode. Override, he want to class the red signal, जैसे IBS हो गया, automatic signal हो गया, he can class by selecting the override, but he is permitted speed of 15 kmph. Up to next signal. Yes, sir. Yeah. नहीं IBS में सर हम चेंज कर रहे हैं उसको कि we will permit, we will issue something this OS में करेंगे. And this is shunt mode selection. MBT, manual brake test also we can do in the this. Sir, the question was that around this loco pilot doing this division. This also can be done in the level ground. Actually, problem this usually is what ABT. But ABT we do not know when to ABT applied. It should be in gradient, level gradient. Then we come to MBT. Manual brake test he will do and take the parameters how you think he take. ये सर आपके लोको इक्विपमेंट्स हैं. This is the your isolation switch is there. Isolation MCB are there. इसमें सर एक चीज मैं कहना चाहूँ, ये इक्विपमेंट इसलिए शो किया गया है कि ये स्पेस एक आइडेंटिफाई जहां लगाना है वो पहले से ही आइडेंटिफाई करके रखेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर व्हेन टेंडर विल बी फाइनलाइज्ड. तो लोको स्पेशली ये प्रॉब्लम अभी साउथ सेंट्रल से वो लोग शेयर भी करेंगे कि ये इशू बहुत बड़ा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस. नहीं इसमें तो मतलब ये तो स्टैंडर्ड तो सर देखिए ये तो आरडीएसओ लेवल पे हो जाना चाहिए. आरडीएसओ से इशू हर टाइप के लोको हैं उसमें. फिटमेंट प्लान इज बीइंग इशूड. सर इसमें फिटमेंट प्लान तो इशू हो रहा है लोको डायरेक्टरेट से इशू हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कंसर्न लोको शेड भी बहुत से इक्विपमेंट लगा देता है. तो वो साइट पे जाने के बाद पता चलता है कि जो स्पेस उन्होंने दिया है वो स्पेस है ही नहीं वहां पे. तो वो पहले से आइडेंटिफाई की ये लोको में हमको लगाना है. थोड़ा बहुत चेंज होगा. थोड़ा बहुत चेंज होगा. एक्सेप्शंस कम ही होते हैं. तो रखने से क्या होगा वो जल्दी काम हो जाएगा. सर ये RFID जो लोको RFID रीडर फिटेड है, ये इज लाइक दिस. ओनली आई वांट टू शो द पिक्चर. रीडर ये दो साइड में ट्रैक साइड में जो RFID लगेगा सर उसको इंफॉर्मेशन को करने के लिए जो एंटीना है बेसिकली स्मॉल ये दिस इज आल्सो UHF एंटीना, वो नीचे लगेगा जिससे वो कैच कर पाएगा इंफॉर्मेशन को. ठीक है सर.
ये RFID मतलब take the information of all the things, whatever program in this, absolute location, direction, station ID, unique ID and all things. I will go. मैं दिखाऊंगा सर. मैं सर 2 लगे होते हैं and behind the cache guard. सर ये जो लोकेशन जो भी आइडेंटिफाई हो रहा है, ये हम लोग इसीलिए कंसर्न डायरेक्टोरेट से परमिशन लेके ही करते हैं. तो वो उन्होंने जहां से सजेशन दिया है सर, वही हम लोग है, क्योंकि बिकॉज यस सर ये हमारा जो RFID टैग जो उसमें स्लीपर में लगेंगे, दिस इज लाइक दिस. ये ब्लैक सेक्शन में इसकी खासियत ये है सर कि कोई केबल नहीं है इसमें, कोई केबल नहीं है सर इसमें. नॉर्मली मटेरियल क्या है ये ऊपर में FRP मटेरियल है. FRP एक्चुअली सर ये साइज जो ऊपर में दिखा रहा है स्लीपर के बीच में, सर कोई चोरी नहीं करता, कोई नहीं करेगा. पैसा इसका बहुत ही सेल वैल्यू नहीं चीपर है. और मैं आई विल गिव सर. वो एक्चुअली यदि एक डैमेज हो गया, हम अभी हर एक स्लीपर के बाद में दूसरे स्लीपर में दो टाइप रिडंडेंसी है इसकी. एक्टिव वाले या पैसिव होते हैं? पैसिव है सर, इसलिए कोई केबलिंग नहीं है इसमें. केवल ये इक्विपमेंट बीच में स्लीपर के बीच में लगेगा, कुछ नथिंग. इट बिकम एक्टिव व्हेन द जब इसके ऊपर से RFID वो बैटरी छोटी वाली होती है. कुछ नथिंग एक स्ट्रिप टाइप का है सर. एक्चुअली ये इतना बड़ा इसलिए दिखाई दे रहा है कि इसको प्रोटेक्शन दे. नहीं, आई विल शो. इट इज ब्लॉक सेक्शन में 1 किलोमीटर है, स्टेशन सेक्शन में हर डाइवर्जन एंड आई विल शो. आई नोट डोंट वरी. एक चीज एक इसमें एक मेरा पॉइंट है सर. इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. कुछ और वो ज्यादा बेटर है. ऊपर कोई और प्रोटेक्शन वगैरह कोई कवर हुआ सर ऑलरेडी ये प्रोटेक्टेड है. अदरवाइज क्या है, वो ऊपर में जो दिख रहा है सर, बहुत छोटा साइज है इसका. एक मिनट. हाँ सर चलें आगे. इसका साइज बहुत छोटा है सर. ये साइज ऊपर है सर, ये वाला साइज एक्चुअली. हाँ, इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवर्स हैं, बाय द कवर, इसलिए बड़ा. क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ. कोटा डिवीजन में क्या सीआरओ बहुत होते हैं, तो जो लोको में अभी भी जो अंडर फ्रेम इक्विपमेंट लगे हुए हैं, कई सेंसर लगे हुए हैं ट्रैक्शन मोटर वगैरह में या स्पीडोमीटर, तो अक्सर वो फेल होते रहते हैं क्योंकि उसका केबल कहीं हो जाता है. तो एक चीज प्रकाशन इसमें रखनी पड़ेगी कि अगर सीआरओ होता है, मतलब कई बार फैंसी के बावजूद भी हो रहा है. बीपीएफपी पाइप के लिए कुछ आप लगाते हो, इसी तरह इसमें लगाना पड़ेगा अल्टीमेटली. सर एक्चुअली दिस इज देयर आर 2 RFID रीडर. सपोज वन गॉट डैमेज ड्यू टू एंड व्हाट इज सेइंग, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे डिवीजन में डेली 12 से 15 सीआरओ होते हैं, तो काफी मैसिव. वो बता रहे हैं सर. ये ऐसे लगे हैं मुझे अब. सर नहीं, किसका क्वेश्चन था कैसे फिट होंगे ये आपको, ये दोनों एक स्लीपर के बाद में हम यहाँ पे लगा रहे हैं सर. ये रिडंडेंट है. नथिंग विल हैपन. वी हैव टू इन द इसमें मेंशन है कि आपका 2 मीटर. No. It is program 3 to 5 meter maximum, 2 to 5 meter. This is industrial gate. This is not the normal. लेकिन सर ये सीआरओ में जो है ना, इसमें मतलब इतना नजदीक है, सीआरओ में ये यूजफुल नहीं रहेगा. नहीं, रिडंडेंसी नहीं रहेगी सर. दोनों को तोड़ देगा सीआरओ. दोनों को तोड़ देगा. तो सी इट इज नॉट दैट मच. कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सपोज सीआरओ इज देयर, इफ सपोज वन टैग इज मिस्ड आल्सो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. सर ये दोनों जो रिडंडेंट टैग है ना सर, जो लगाया स्लीपर में, एक स्लीपर छोड़ के लगाया, ये एक्चुअल में एक ही. अरे ठीक है यार, वो तो चेंज कर देना यार. तो चेंज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये 4 स्लीपर उस लोकेशन पे सुनो उस लोकेशन पे रीड नहीं करेगा, लेकिन नेक्स्ट जब टैग आएगा उसको रीड करके फिर नॉर्मल. एक्चुअली two tag set is continuously missed, then even though first missed, second missed, there is no problem. It had actually purpose of this RFID tag to give the absolute location, because the one slip and skid is there. Based on the movement of the speed sensor, this will absolute location changes. That is updated every RFID tag. Purpose is only this, nothing else.
दिस एब्सोल्यूट सेक्शन में 1 किलोमीटर, आफ्टर 1 किलोमीटर स्टेशन सेक्शन में हर सिग्नल पोस्ट में होगा 200 मीटर पहले होगा, एंड दिस आई विल गो फर्दर। ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिक में सर सिग्नल 200 मीटर पहले, फिर आपका 1 किलोमीटर। इसको बेसिक जो फंडामेंटल इसका ऐसे समझ सकते हैं सर, जैसे ट्रैक सर्किट होती है, ट्रैक सर्किट के लिए आप अलग अलग बनाते हैं, उसी तरीके से टैग लेके हम एक टिन बनाते हैं, ट्रैक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके बेसिस पे पता करता है कि ये एरिया इस टैग को कवर कर रहा है, और चूंकि ब्लॉक सेक्शन में उतनी जरूरत नहीं रहती, इसलिए 1-1 किलोमीटर पे जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए रखते हैं। ये सर हमारे लोगों के ऊपर जो यूएचएफ एंटेना, जीएसएम एंटेना एंड जीपीएस एंटेना फिटेड है, ये ऐसे लोकेशन इनकी फिट होते हैं। टोटल हमारे एक्चुअली 2 रेडियो मोडम है, फुल डुप्लेक्स है, तो 4 एंटेना लगते हैं यूएचएफ के, 2 जीएसएम एंड 2 जीपीएस। ये सर हमारा एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में कम्युनिकेशन रेंज कैसे है। दिस इज द एलएसएस के अबाउट 2 किलोमीटर्स, 1.5 to 2 किलोमीटर कम्युनिकेशन रेंज जोन है। इसके बाद ब्लॉक सेक्शन आ जाता है। इसके बाद अगेन इट स्टार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस से अबाउट 1.5 किलोमीटर पहले हम कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। इट इज लाइक दिस सर। एब्सोल्यूट सेक्शन में सर हमारे हम जो एमए इंफॉर्मेशन, एसएसपी इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज फ्रॉम द एडवांस स्टार्टर मतलब पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं अप टू होम। Even though track profile we go to up to starter, means gradient, SSP and PSR, everything we do up to this. MA we are giving up to home. This no issue is coming. And suppose some loco enter in the project side due to any reason, so loco to loco communication is there, so it is prevented. About sir 1 kilometer. हाँ रहता है। ये सर हमारा ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में कम्युनिकेशन कवरेज हम ओवरलैप करते हैं 2 सिग्नल को, बिकॉज ऑटो सेक्शन में हमारे पास स्मूथ हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर हो, वंस इट इज कम्युनिकेटेड विद अदर स्टेशन। हाँ सर, हाँ with overlapping sir, and this is the frequency 427.525, 429.525 and 428.775 this frequency is there। ठीक है, हाँ ऑलरेडी इन प्रोसेस है। हाँ सर, हम क्या क्या इनपुट्स लेते हैं एंड आउटपुट क्या क्या देते हैं। कैब इनपुट देते हैं, दैट इज न्यूट्रल एंड रिवर्स फॉरवर्ड, एंड फॉरवर्ड रिवर्स को देते हैं, ईबी प्रेशर स्विच वगैरह एवरीथिंग लेते हैं। एंड आउटपुट ट्रैक्शन कट ऑफ एंड हॉर्न, इतने हम उसको देते हैं लोगों पैलेट को। दिस इज द जीएसएम एंड जीपीएस एंटेना। ये सर स्पीड सेंसर 2 लगाते हैं। ये हमारा सर नॉर्मली हमारे पास 2 टाइप लोको हैं, डीजल लोको भी है और इलेक्ट्रिक लोको। तो डीजल लोको 72 वोल्ट है एंड इलेक्ट्रिक लोको 110 वोल्ट, दोनों के लिए हम कैटर करते हैं। दिस इज द हाँ, लेकिन दोनों के लिए पावर सप्लाई यूनिट चेंज होती है। हाँ पावर सप्लाई यूनिट, क्योंकि 72 वाला लगाएगा सर। हाँ ये सर हमारा ब्रेक इंटरफेस यूनिट है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है, एक न्यूमेटिक पार्ट होता है। एंड दिस BIU डजंट इंटरफेयर द लोको पायलट। व्हिच इज द मोर रिस्ट्रिक्टिव? सपोज our KAVACH has applied the brake, loco pilot cannot overrule that. If the loco pilot applying the brake, our TCAS will not overrule. This is like this. दोनों नहीं, जो ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होगा सर, सपोज लोको पायलट ने ईबी लगाया है, हमारा एफएसपी लगाया है, तो ईबी विल एप्लीकेबल। दिस इज लाइक दिस। ये सर इसको हम चलते हैं और आगे सर, ये BIU का पूरा है सर। हाँ अब हमारी मेन आता है कि 3 नंबर, दिस इज टू बी डिफाइंड इन द डिविजनल हेलीकॉप्टर ड्राइंग सेक्शन। This 3 number should not be repeated in every station. This should be 30 to 40 kilometer, and this range is there up to 1023 number. This is the tag 3 number. 25 to this Southern Nagar, 25 to 40, and 81 to 82. This all range we have given different range. याद आगे है सर।
then this total how many, this is to be defined by the railway, sir. The number had to be allotted by the railway. आपने रेंज लिखा है फिर आगे टोटल लिखा है, व्हाट डज इट मीन? Total 16 tin are there, sir. 16 tin allotted for the southern registration. सर जस्ट लाइक आप ऐसे समझेंगे ट्रैक सर्किट जैसे होते हैं, तो उस टाइप से टिन इज जस्ट लाइक ए ट्रैक, एकदम वही नहीं है, बट समझने के लिए ये है कि आप 16 टिन हो गए। तो सरनगर स्टेशन पे यू आर सेइंग कि देयर विल बी 16 टिन्स एट द स्टेशन, और उसमें उस टिन को बनाने में कितने टैग लगे हैं, आरएफआईडी टैग, वो बगल में दिया हुआ है। टोटल 64 टोटल है, दिस इज नंबर ऑफ टैग्स। टैग्स ओके 64, ठीक। लूप लाइन भी है और बाकी सब चीजें। तो ये एक्चुअली ये हमारे ड्राइंग सेक्शन को डिफाइन करना है कि इट शुड नॉट रिपीट इमीडिएटली टू नेक्स्ट स्टेशन टिन नंबर, बिकॉज द एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, communication range is about 10 to 12 kilometer, may interfere. To avoid this, this is the tin has to be allotted by the headquarters, sir. दूसरा इसमें एक और चीज है, for that I will be surprised, sir. Okay, sir. ठीक है, ठीक है सर। ये हमारा एक स्टेशन का आरएफआईडी लेआउट है। एक्चुअली टिन इज द ट्रैक आइडेंटिफिकेशन नंबर व्हिच इज अलॉटेड वर्चुअली इन द कॉन्फ़िगरेशन टेबल ऑफ द स्टेशन विकास, एंड दिस इज द हाउ द वी आर गोइंग द दिस डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, दीज आर द टिन। ये हमारी फ्रीक्वेंसी पेयर है सर। हमारी जो ओपन फ्रीक्वेंसी है F0, दिस इज द ओपन फ्रीक्वेंसी। इफ द लोको डजंट register to any station, then it will continuous rotating on location, direction, and what is the loco number, everything rotating, continuous rotating in the open air. This is, sir, I have given the, you have to allot the station ID of the each and every station. And this is West Central Railway, I have given number 33 to 35. Means 3 division are there. 1 division, you can go up to 33999. Means, and this ID plus which SIM is allotted, that is you have to give to RDSO. RDSO will register in the KMS. Every division will have a specific number, yes, initial sir. Code, two-digit code. Every division, every zone, and every zone we have given the number. Means this zone will have 36, 38 North Central Railway. नहीं, जैसे वेस्ट सेंट्रल में है 33, 34, 35। हाँ, तो I'm just presuming it doesn't mean कि उसमें एक भोपाल का हो गया, कोटा का हो गया, और एक जबलपुर का हो गया। तो आप जो उसके पहली 2 डिजिट हैं उससे यू कैन गेस कि कौन सा डिवीजन है, राइट? यही है ना? जैसे कोटा का वाले 35 ही हो सकता है। नहीं, ऐसा है स्पेसिफिक डिवीजन वाइज है या नहीं, यू कैन गिव एनीथिंग, बट इट शुड नॉट बी रिपीटेड, यूनिक नंबर। प्लान कर सकते हैं वैसे सर, उसको प्लान करना है सर, बट वो इंटरनल इशू करना पड़ेगा आपको। That actually I will tell what is the purpose, because this all the unique ID has to be registered in the KMS, and RDSO will do the RDSO will deputed the person. Sir, this is the next job is there. ठीक है। This sir, static speed profile में हम PSR information देते हैं, LC gradient देते हैं, section gradient देते हैं, एंड टेम्परेचर प्रेडिक्शन, ये इंफॉर्मेशन रहती है जो कि स्टेशन से लोगों को ट्रांसमिट की जाती है। ये सर ग्रेडियंट का हम एक चार्ट दिया है जो फील्ड में रहता है। ये तो कुछ नहीं है सर। ये सर क्या है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस केएमएस, ठीक है सर, सिम नंबर एंड दिस केएमएस की मैनेजमेंट शुरू वाला जो, हाँ, दैट इज ऑलरेडी सो प्रीवियस सर। How the system is connected, sir? ये एनएमएस और केएमएस का है sir. Frequency is but it has to be applied by the concerned railway, and WPC with the talk and this frequency will be allotted, and उन्होंने नहीं now it is not, no sir, अभी WPC ने जो दे दिया बैंडविड्थ, उसके भी आप अप्लाई करेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। इसका तो अपना सेपरेट क्लाउड होगा सर? नहीं, सेपरेट क्लाउड नहीं। एक्चुअली ऑल द इमरजेंसी पैकेट्स
had to be sent in the GPRS. Even the station, loco, everything is sent through GPRS. And once key is taken through the GPRS, unique SIM number. Every loco has two unique SIM number. Two SIM आपके लोको में लगेंगे, दो स्टेशन में लगेंगे, NMS में भी लगेगा. These all things are there. So this work on the GPRS system. Because the key outside थोड़ी access कर सकता है अपने internet पे. नहीं, this is protected. This is protected with the certain system. GPRS is the open system. That's why we have gone through the EN standard 50159. ये सर आपका डॉक्यूमेंट्स हैं. ये आपका ये है पैड सेटअप. ये जरूरत नहीं है सर. साइट टेस्टिंग ये वो कवर करेंगे. साउथ सेंट्रल कवर करेगा सर. ये ऑलरेडी सर हमारे कैसे लोगों में फिट हैं ये दिया हुआ. इसको रहने दो सर. ये सर हमारा ब्रेक सिस्टम हमारे इतने टाइप के हैं. कन्वेंशनल में हमारा डीजल इलेक्ट्रिक है, उसमें IRB टाइप BIU लगेगी. एंड CCB 1.5 है. CCB नार ब्रिमिज का है सर ये, प्लस E70. हाँ सर, actually we have done the trial for these many locos. This selection will come in front of the loco once is grown configuration value. Light engine है, light engine multi है, passenger 3 to 7 है, passenger 8 13 है, different. Each selection will come and he has to choose the menu only. And brake application will be same pattern. Sir, next sir. सर हाँ सर वो ऑलरेडी once he selected 42 ton 500 ton already it is there. We permitted selection. If he is wrongly selected due to any reason, if suppose he is selected, he is having the lengthy train, and once TLM is calculated in station, he will system failure will come. ये उसको सिलेक्शन करना. ओनली ये टू इसको ड्रॉप डाउन मेनू में है. हाँ ड्रॉप डाउन मेनू में है, डबल में है. ही हैज टू सिलेक्ट 2 times पर्पजली. ये सर आपका BIU का सिस्टम है. ये अभी इसको नहीं. हाँ कवच 2.0 हमारे नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होने वाला सर. हमारा जो मिशन रफ्तार के लिए 160 के लिए है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम है. स्पीड अप टू 160 है. रिमोट इंटरफेस रेस्ट्रिक्शन भी आएगा एंड इंटरफेस विद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक. नहीं अभी 4.0 सर 3.2 में आपने वो किया है, टेंडर किया है, लेकिन 4.0 विद इन 10 days इशू हो रहा है सर. ऑलरेडी इट इज डिस्कशन विद दिस. देन ऑटोमेटिकली आपको टेंडर अपना माइग्रेट करना पड़ेगा नई स्पेक से. नहीं ये नहीं ऑलरेडी किया हुआ है सर. किया हुआ ऑलरेडी किया हुआ है सर. एंड ये फ्यूचर प्लान है सर हमारा. ट्रायल विदाउट लाइन साइंसिंग ऑलरेडी इज इन प्रोग्रेस and interface with CTC and TMS. हाँ सर जो अभी टेस्टिंग नहीं तो इस सेक्शन में नहीं यूज होगा सर. पर्पस उसका यही है कि जो इंफॉर्मेशन ट्रेन का जो इस सिग्नल के एस्पेक्ट को दिखाने के लिए यूज होती है, नॉर्मली ट्रैक के पैरामीटर्स को लेते हैं, वो डायरेक्टली हम ट्रैक के पैरामीटर्स लेके हम इसको इस पे दे देंगे लोको में. तो जैसे आपको वो सामने सिग्नल एस्पेक्ट दिखता है वैसे ही सेम इसमें दिखेगा मूवमेंट DMI में. तो ये टेस्ट हुआ है. अभी तक तो ठीक है सर. टेस्ट में मैं खुद भी उसका पार्ट रहा हूँ तो देखा है कि ठीक ठाक चल रहा है अभी. बट अभी इसके ट्रायल और करेंगे हम लोग. ये सर हमारा फ्यूचर प्लान है जो कि 2023 या 24 तक आएगा सर. ये एक्चुअली ट्रायल किया था सर. जो जैसे फ्यूचर प्लान है तो ऑटोमेटिकली कुछ सिस्टम फंक्शनल हो जाएंगे, तब तक कुछ हो रहे होंगे तो वो कंपैटिबल होंगे. सर हार्डवेयर नो चेंज इज रिक्वायर्ड, ओनली सॉफ्टवेयर चेंज इज रिक्वायर्ड. हाँ सर देयर इज नो हार्डवेयर चेंज इज रिक्वायर्ड. दिस इज सर व्हाटएवर वी हैव डन इन मथुरा आगरा सेक्शन ट्रायल ऑफ द 160 kmph कि हमने 160 में क्योंकि WP5 लोगों से किया था विद LHB कोचेज. We have done the trial with all the 3 firms with 6 coaches plus 2 power car.
because this is only section available where we can do that 160 campus NCR. ये सर हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेक हैं, नॉर्मल ब्रेकिंग, फुल सर्विस ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक एंड लाइट इंजन ब्रेक। ये इसको सर, ये सर एक्चुअली ये हमारा नार बीएमसी में एक सेपरेट यूनिट लगती है। ये यदि कवर सिस्टम लगेगा जो कि इंटरफेस करता है इनके ब्रेक सिस्टम से। ये ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में कैसे हमने ट्रायल किया है ना थिंग्स। ये नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको आगे चलता हूँ सर। आपके डिवीजन में ये आपको डिस्प्ले मिलेगा एनएमएस में, व्हाट स्पीड इफ यू क्लिक इन। ये सर जस्ट लाइक जैसे डेटा लॉगर का एनएमएस होता है सर, उसी तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड डिविजनल कंट्रोल में एक एनएमएस सिस्टम लगेगा और उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन है आप रियल टाइम में देख सकते हैं। यस नहीं रियल टाइम में सर, वही रियल टाइम सिमुलेशन मोड में देख सकते हैं। यस सर, हाँ सर वो भी, हाँ देख सकते हो। यस सर, हाँ देख सकते हो, प्लेबैक कर सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सी इंफॉर्मेशन इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। यस सर, एक्चुअली डाटा लॉगर में आपका ब्लॉक सेक्शन नहीं आता है सर, लेकिन यहाँ ब्लॉक सेक्शन के किस स्पीड में ट्रेन चल रही थी एवरीथिंग विल कम। इसमें टोटल सारे मतलब जैसे 59 हमारे स्टेशन है तो सारे स्टेशन एट ए ग्लांस दिखेंगे या सेलेक्ट करना पड़ेगा? एक्चुअली एट ए ग्लांस दिखेंगे, आप क्लिक करोगे तो बड़ा स्टेशन हो जाएगा वो। ये डेटा है, ये सर हमने अबाउट 2.5 लाख किलोमीटर ट्रायल किए हैं साउथ सेंट्रल रेलवे में। सिंस 2018 ऑनवर्ड वी इतना ट्रायल किया सर। ये ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी? सर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ रेडियो मॉडेम मॉनिटरिंग। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा रेडियो मॉडेम की फेलियर ज्यादा थे, तो अभी क्या कर रहे हैं आप डिवीजन में बैठे हुए किस रेडियो का रिवर्स पावर क्या है, फॉरवर्ड पावर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ऑल थिंग्स वी कैन सी। इफ सपोज सम मॉडेम इज बिहेविंग मिसबिहेविंग, यू कैन चेक द सिस्टम। ये हमारा 18 से चला था रेगुलर। हाँ बिल्कुल 100% वी आर मारना है। ये ऐसा नहीं है जो आज दिखाई दे रहा है वो बेस्ड ऑन फीडबैक ही है, उसमें बेस्ड ऑन फीडबैक हम सर ऑलरेडी 4.0 में व्हाट आर द इशू आर देयर, अबाउट द 60 इश्यूज वेयर देयर, माइनर इशू आर देयर, दैट इज रिक्वायर्ड ओनली सॉफ्टवेयर चेंज दैट हैज बीन एड्रेस्ड। एक दो चीजें जो साइट पे प्रॉब्लम थी सर वो मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे सर एक चीज मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत इसमें जो इंटरलॉक्ड एलसी गेट रहेंगे वहां पे आपको RIU जस्ट लाइक एक छोटा इक्विपमेंट देना होगा, दैट शुड बी कनेक्टेड विद स्टेशन। इनिशियली उस स्पेसिफिकेशन में क्वाड भी ऑप्शन दिया हुआ है, बट बेस्ड ऑन फीडबैक इट वाज फाउंड कि क्वाड इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि वो 2 किलोमीटर तो लिखा हुआ है क्वाड के लिए, लेकिन वो ठीक से चलता नहीं है क्योंकि रियल टाइम में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप वो 4.0 में हमने क्लियरली लिख भी दिया है कि OFC शुड बी प्रोवाइडेड। इस टाइप के छोटे छोटे चीजें जहाँ पे वर्कमैनशिप की प्रॉब्लम है वो सब चीजें काम करते समय ही मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो आपके प्री कमिश्निंग चेकलिस्ट हैं और ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से देख के भरेंगे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसमें अभी कितनी मतलब ये जो सिस्टम है उसमें एक पर्टिकुलर मेक ही चल रहा है या और भी हैं 2-3 मेक? सर जो 250 किलोमीटर का इधर का सेक्शन है उसमें 3 मेक के हैं जो अभी अप्रूव थे, मेधा, कर्नेक्स एंड HBL। यस सर, इसके बाद और भी कोई है? अभी 2 कंडीशनल अप्रूवल 2 को और मिला है सर, एक जीजीट्रॉनिक्स है और एक है QCPL, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। इनकी जो डिजाइन है वो मॉड्यूलर है, मतलब एक दूसरे से रिप्लेसिबिलिटी है? नहीं सर वो तो नहीं, मतलब अगर लोको में भी है तो वो कहीं नहीं। इंटरऑपरेबल बस यही है कि एक के साथ दूसरा काम करेगा, बट कार्ड्स स्वैपेबल नहीं है कि ऐसा नहीं ना, मतलब यहाँ का लोको जाता है स्पेशली गुड्स लोको तो घूमता रहता है पूरे इंडिया में। अब उसमें एक पार्ट डिफेक्टिव हुआ तो जब वो लोको शेड में वापस आएगा तभी अटेंड होगा। सर
ये अभी जैसे अभी तो हर जगह लगा नहीं है सर, लेकिन जब आपका जैसे अभी प्लान है कि हर जगह लगना है और अभी मिशन रफ्तार के लिए है, तो कहीं ना कहीं वो शेड में ही जाएगा। और अभी जो वेंडर जैसे अभी 3 ही सप्लाई कर रहे हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो हर सेक्शन में ही वो जैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे डेवलपमेंटल वेंडर हैं, तो उसके कार्ड्स तो तभी चेंज कर पाएंगे जब उनके पास अवेलेबल रहेगा। ये तो है। नहीं वही मतलब आप ऐसा नहीं है कि इक्विपमेंट करनेक्स का है और आप लगा देंगे। वो इंटरऑपरेबल है, वो इंटरऑपरेबल है, कोई इशू नहीं। वो तो टेस्ट करते हैं हम लोग, उसमें कोई इशू नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं उसमें कोई इशू नहीं। नहीं वो बिल्कुल नहीं है सर। मतलब अगर मेधा का लोगो है तो वो करनेक्स के स्टेशन पे भी काम करेगा, एसबीएल के भी स्टेशन पे काम करेगा और सभी पे। हाँ उसमें कोई इशू नहीं है। इशू बस यही है कि आप ऐसा नहीं है कि मेधा का कार्ड, क्योंकि सबके नाम भी अलग है और सबका अलग पावर सप्लाई है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि एक दूसरे को लगा सके। सर ये हमारे जो इशूज है वो हमने रिजॉल्व कर लिए हैं, ये 4.0 में सभी अब ये उस तरह से है कि सॉफ्टवेयर ये उस तरह से जैसे सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड है और हार्डवेयर सब कंपनियां अलग अलग बना रही हैं। Actually, all the protocol, all the things are defined by RDSO. This is specification about the product page. And if one bit is changing, there is no communication then. It is like this. And this is the whatever the sir this. Sorry sir. This temperature speed reduction we have started in 2019. Excellent. सर ये हमारा TSR सर्वर हमने लगाया था। 3 स्टेशन है, सुरेंद्रनगर, हाफिजपेट and Lingampalli, and it is running since 2020. And now we want to explore it to 265-kilometer development section. Then we will test it and we start the feeding from the zonal headquarter, because the zonal headquarter has to feed the TSR information division. Sorry, division headquarter. There will provide the SIL4 redundant server. That is the SIL4 also. This is how the system is connected. Maximum 200 station can be connected. ये फीड, ये सर फीडिंग है, कैसे फीड करेगा वो? सर ये हमारा है, हमने एक कंपेडियम ऑफ द आरडीएसओ वेबसाइट में अपना कंपेडियम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कवच, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं, प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट है, ऑल द अपलोडेड विद द न्यू वर्जन। सो दिस इज मतलब उसमें मैक्सिमम जो लेटर्स, पॉलिसी लेटर्स और सारी चीजें सारे कवर किए गए हैं। ये सर तो अगर किसी को जानकारी चाहिए तो यू कैन विजिट दैट वेबसाइट, इंटरनेट वेबसाइट, और वहां से आपको डॉक्यूमेंट सारे मिल जाएंगे। दिस सिम प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, एवरीथिंग वी हैव अपलोडेड, एंड द ऑल द कमीशनिंग, प्री कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट, एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड, एंड वी अपलोड व्हेन द एनी न्यू वर्जन कम्स। सो टेक द करंट व्हाटएवर द इज। नहीं सर, थैंक यू सर। एक लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे सर, एक्चुअली क्या है कि आप सब मतलब WCR से 2 SSC और जूनियर ऑफिसर डिटेल कर दो, हु कैन सी द रियल लोको एटलीस्ट फुट प्लेटिंग। जाएंगे डिप्टी CST जाएंगे? नहीं, उससे फायदा क्या होता है सर कि जिसे फर्स्ट टाइम कोई भी ट्रेवल करता है उसको समझने के मैं क्या चेक करूं, ये तो सर नहीं, they should see also the trial moment also. नया सिस्टम है तो और भी। हाँ, अब आप लोग को जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए। आप पूछ सकते हो। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोल। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि इसमें जो लोगो है, जो कैब में जो सिग्नल्स के एस्पेक्ट है वो अपीयर होंगे, तो बीच में जैसे अभी चल भी रहा था कि अभी हम जो मूविंग ब्लॉक सिस्टम है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो ये उसका पार्ट रहेगा क्या सर? मूविंग ब्लॉक इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि ये सिग्नलिंग बेस्ड सिस्टम है, इंटरलॉकिंग बेस्ड सिस्टम है। केवल उसको एस्पेक्ट दिखेगा। एस्पेक्ट, मूविंग ब्लॉक इज सेपरेट कंसेप्ट इज देयर, देयर इज द रिडंडेंसी ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी 99.999%, because that is total communication based system. Moving block, that is the level 3 is there. This is not the ये ऋतुराज, अभी अपने यहाँ फिक्स सिग्नल वाला है, अभी मूविंग ब्लॉक की तरफ तो बढ़े नहीं है, तो इसमें जो सिग्नल एस्पेक्ट है दे आर गेटिंग फ्रॉम द स्टेशन, क्योंकि रिले रूम से वहां से आप ले रहे हैं, ठीक है ना?
सिग्नल का एस्पेक्ट एक्चुअल आएगा, Everything क्योंकि will come. दिस इज बीइंग रेड फ्रॉम द रिले रूम। जो टीपीडब्ल्यूएस है उसमें इट वाज गैसिंग, ऑटोमेटिक था, तो वो डिफरेंट है। इसमें रिले रूम से तो एक्चुअल आ रहा है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आप लोगों में था कि टीपीडब्ल्यूएस एंड टिकास में क्या डिफरेंस है। मैं आई विल बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। दे आर यूजिंग द RFID in place of RFID ballast. Ballast is connected with the, there are two type ballast are there, fixed ballast and switchable ballast. Switchable ballast connected with the signal and they capture the signal position and then give the moment authority. There is a speed, once end of authority comes, it release speed comings. It control the speed, come to 15 and release the brake. Loco pilot had to control the things. Number one is there. And second thing is there, that is the movement authority in not in the continuous there. It is changing on the once the loco come to switchable device. This is the this is. हो गया। उसमें भी ना टीपीडब्ल्यूएस में जो है और ईटीसी लेवल आई थिंक लेवल 2 उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि ETCS लेवल 2 में जो सिग्नल एक्चुअल एस्पेक्ट वो रीड करता था, इसमें मतलब नहीं बैलेंस में नहीं करता, बैलेंस में नहीं करता था। मैं बता रहा हूँ कि उसमें क्या करता था कि वो जो सिग्नल है, सिग्नल से आप ब्रेकिंग डिस्टेंस से पहले तक आप उसको बैलेंस को लेके आते थे। यस अच्छा। ये जो TPWS वाला था, इसमें दिस वाज डिजाइन ओनली फॉर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी एंड इट वाज नॉट रीडिंग द एस्पेक्ट ऑफ द एक्चुअल सिग्नल, उससे पहले वाले सिग्नल का एस्पेक्ट रीड कर रहा था। उसमें जो बैलेंस लगी हुई है वो सिग्नल से करीब 2 या 3 मीटर पहले लगी हुई है, तो ये इस सिग्नल का एस्पेक्ट रीड करके अगले सिग्नल का एस्पेक्ट वो गैस कर रहा था। तो उसमें ये प्रॉब्लम काफी आई थी कि अगर इसने ये इस सिग्नल को अप्रोच कर रहा है एंड अगले सिग्नल का एस्पेक्ट चेंज हुआ कि वो जो अगली कोई ट्रेन थी वो अगर वो रीड नहीं कर पाता। So that was a major एक लकुना था। सर दूसरा क्या है, WAP5 लोगों में TPWS only apply the penalty brake. We have modified it and we have come to once there is the in the authority there, it apply the brake and release the brake. In between running train, it has not to come to zero. This is the NARBMC has updated their software. सर एक क्वेश्चन और सर जो आपने बताया है अभी SOS बटन जो बताया कि ये 3 किलोमीटर के एरिया में सारे लोकोस को रोक देगा, इस बटन का मिसयूज भी हो सकता है। मान लीजिए it is counter is provided if the misusing he had to record in the register, there is no misuse. मान लीजिए स्टोर in the loco also he had to record the counter. SOS नहीं SOS का मिसयूज तो क्या होगा? नहीं गलती से दब जाए कभी तो नहीं two बटन ऑपरेशन, it is not single, this has to be done purposely. एक बटन दूसरा एक हाथ से भी नहीं दबा सकता, he has to consciously press the 2 buttons. मान लिए 2 बटन दबा दिया, उसको डिसेबल कैसे करना कि सारे लोग again he had to press the same cancel it. कैंसिलेशन का ऑप्शन है ना इसमें इसीलिए वो काउंटर लगा हुआ है। तो अगर SOS हुआ है, अब तो SOS से कोई इमरजेंसी है तो उसमें मान लीजिए हम लोग इस टाइप से हम लोग कंसिडर कर लें कि ड्राइवर रिपोर्ट करता है कि जर्क लगा, ठीक है ना, तो जर्क लगा, अब वो कई बार 90% टाइम में कुछ नहीं मिलता है, तो बट वी कांट से टू ड्राइवर के नहीं आपको रिपोर्ट नहीं करना है, तो दैट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो इसमें SOS है, अगर SOS ही वी हैव टू एनकरेज कि SOS अगर उसको खतरा लग रहा है तो SOS दबाए, हो सकता है कि असेसमेंट उसका गलत हो। क्योंकि मान लीजिए दिल्ली स्टेशन में आपने SOS दब गया गलती से जो भी है या इंटेंशनली दबा दिया, तो सारे लोग रुक जाएंगे वहां पर। मेट्रो he can cancel immediately. He can cancel immediately. So by mistake क्या है, कैंसिल कर सकता है, उसके पास पूरा है। उनका क्वेश्चन ये है कि बाय मिस्टेक नहीं दबाया है उसने, कुछ समझ उसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि SOS दबाना चाहिए, तो ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर वो SOS कुछ समझ के दबा रहा है तो हमको तो उसके जो व्यू है उसको सम्मान करना पड़ेगा। मेरा मतलब है दबाने के बाद वो डिसेबल होके सारे इंजन दोबारा चलने लगेंगे ना, या टाइम रहेगा। नहीं और भी दूसरा ऑप्शन है, मैं सर मैं सही है, नहीं मैं आपको सारे रुक जाएंगे ना वहां। नहीं सर मैं आई विल टेल सेकंड थिंग, इफ loco will come to zero, he had to acknowledge it, he can then move slowly, even though SOS is there. It is not like this कि he will stop and he had to, ऐसा नहीं है, he will have to come to zero, acknowledge it, then he can move it up to a speed of 15 kmph 30 kmph. This is like this.
We have considered all the operation issue. Even though some feedback is there with you. सेकंड क्वेश्चन मेरा है जो आपने ड्रॉप डाउन भी नहीं बताया है और फीडिंग द लोड ऑफ द इंजन और ट्रेन का, अगर वो फीड नहीं करता तो ट्रेन चलेगी ही नहीं या उसके फीड करना, वो ही कैन नॉट सिलेक्ट द एसआर मोड। बेसिकली आप जो पूछ रहे हैं वो सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा, उसको कुछ ट्रेन नहीं चलेगी ना, विदाउट सेलेक्ट वो ऑप्शन ही नहीं आएगा, उसके आगे आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। तीसरा आपका जो एंटेना लगाया है आपने इंजन में, जो एंटेना लगा हुआ है वो 160 स्पीड को झेल सकता है या टूट के बाहर हो जाएगा? झेल सकता है, 250 kmph वो झेल लिया है एक्चुअली। Sir, sorry for the interruption, sir. Sir, actually, SCR people are also there, officers are there, and they have an NI planned today or tomorrow. Okay. So we'll take them first, and we'll take the question after. एक क्वेश्चन था। धन्यवाद सर, आपके द्वारा कवच पर दी गई चर्चा सभी श्रोताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। सर एक क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन आप नोट कर लो। साउथ सेंट्रल इनको क्योंकि आगे जाना है, उनको अपना एनआई वर्क करना है, तो उनको पहले फ्री कर दिया जाए। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री VNM राव सर, CST प्रोजेक्ट साउथ सेंट्रल रेलवे, एम श्री मुनि कुमार सर, डिप्टी CST प्रोजेक्ट साउथ सेंट्रल रेलवे, हमें कवच सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स और करंट वर्किंग के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। सर नमस्कार सर, I am Nagamalleshwar Rao. IRSSC 96 batch, and here in Southern Railway we have implemented around 400 kilometers during the current year, and the previous year of course 300 kilometers, and along with RDSO we have been doing these works regularly. I am sure that whatever the talk we have given already in the research and various forums will be definitely useful for other railways, and Mokar Sahab, I know him, we work together in Sharjah also, and here we are having my deputy CST, Mr. Muni Kumar. He is also engaged in TCAS projects for several years, which is started implementing during 2011 and up to 2019 for 265 kilometers. And now what we'll do, we'll share our experiences. Muni Kumar will start the presentation, and any doubts at any point of time, you can disturb us. It not be at the end of the project, end of the presentation. And any doubts, you can always write in the chat box, or you can always ask. Second thing, I'll take the entire session, the end also, small 4-5 slides, I will take it. Meanwhile, Muni Kumar will start the presentation. Muni, you can start. Yes, sir. Okay, sir. Sir, very good morning, sir. I am Muni Kumar, sir, 2006 batch. Presently looking after the implementation of 1200 kilometers KAVACH in Southern Railway, sir. Before starting, sir, I request Mr. Anuj Nema to play a small video on the KAVACH, sir. I just shared him, sir. To better understand the working of system, sir. Share screen. कर रहे हैं ये शेयर साउंड नीचे, ठीक है अब शेयर करें। The Indian Railways is witnessing a monumental rail revolution. Train collision avoidance system, also known as KAVACH, is an indigenously developed automatic train protection system under the aegis of RDSO. KAVACH is designed to provide protection to trains against signal passing at danger, excessive speed, and train collisions caused due to human error. KAVACH serves as a major testament to ambitious plans of Indian Railways to ensure safety in train operations over high-speed and high-density network.
KAVACH is designed to assist loco pilots with display of crucial information pertaining to approaching signal aspects in the loco through driver-machine interface, DMI. KAVACH will alert the loco pilots to reduce speed proportionately in accordance with restrictive signal aspect approaching ahead. In case the loco pilot still fails to respond appropriately, KAVACH takes over and automatically applies brake in a phased manner until the speed of the train is restricted in order to ensure zero chances of signal passing at danger. This is especially helpful during extreme weather conditions where the loco pilots are unable to sight the signal aspects. KAVACH is a comprehensive automatic train protection system, works on the principle of continuous update of movement authority, which is featured in advanced train protection systems used across the world. The station KAVACH unit computes the movement authority based on approaching signal aspects and location of the train. KAVACH works by constantly sharing information within the three major subsystems such as station KAVACH, loco KAVACH, and on-track equipment RFID tags. RFID tags are installed on the track at every 1 kilometer in the block section, at approach of signals, and at every berthing track. The static information such as location information, track identity of the RFID tags mounted on the rail sleepers are captured via RFID readers attached to the loco. The same is transmitted to station KAVACH via radio communication from loco KAVACH. The station KAVACH gains information regarding the location and direction of the train entering in its jurisdiction from loco KAVACH. The station KAVACH unit is interfaced with the station signal interlocking system and continuously acquires the vital signal information. The station KAVACH will update the loco pilot about the approaching signal ahead and permitted speeds through driver-machine interface DMI of loco KAVACH. DMI displays target speed, movement authority, signal aspect, location of the train, and also allows the loco pilot to send SOS messages during emergencies. In order to transmit data in a fast and secured way, the information from station KAVACH is transmitted to several loco KAVACH through station radio antenna mounted on the tower. Every station, mid-section interlock level crossing gate and IB hut are provided with a tower of 40 meters height. This enables transmission and reception of radio signals within the range of 4.5 kilometers, thereby ensuring maximum coverage. KAVACH ensures that only authenticated systems will be able to access information shared. This is made possible with radio encryption by using Key Management System, KMS. The system information is exchanged via secret keys, duly ensuring maximum security. Network monitoring system helps in troubleshooting of errors through real-time monitoring via a central server located at the divisional office, which is connected to all the stations with OFC network. All the events of station KAVACH and loco KAVACH are being monitored continuously via NMS for predictive and preventive maintenance. KAVACH is an indigenously developed state-of-the-art technology to ensure higher standards of safety in train operations. In case loco pilot fails to control the speed of the train while approaching the danger aspect of the signal, KAVACH will take over automatically and apply brakes to stop before the red signal. In the absence of KAVACH, the SPAD may lead to collision. KAVACH is designed to avoid collisions in the block section due to human errors during manual train operations in case of failure of signal interlocking systems. In an unusual scenario where two trains are approaching each other in opposite direction on the same line, loco KAVACH of both the trains automatically apply brakes to bring the trains to a stop.
In the absence of KAVACH, this scenario may result in head-on or rear-end collision. While negotiating the crossovers at station to enter loop line, loco pilot shall adhere to restricted speed of 15 km per hour or 30 km per hour. KAVACH informs the target speed to be followed by the loco pilot before approaching loop lines. In case of excessive speed above the target speed, KAVACH automatically brings down the speed to the required speed by duly actuating the brake system, thereby avoiding chances of derailment. Loco pilot has to adhere to the permanent speed restrictions imposed in the section. These permanent speed restrictions exist at locations like bridges, sharp curves, etc. In case of the failure of loco pilot to control the speed of the train while approaching permanent speed restriction zones, KAVACH takes over and reduces the speed to desirable limits to avoid any unusual incidences. The station master can alert the locos by broadcasting SOS messages during emergency situations like flooding of tracks, landslides, etc. within its communication range. Similarly, loco pilot can send SOS messages to station KAVACH and other loco KAVACH in case of emergencies or unusual occurrences. The loco horn is automatically triggered while approaching the level crossing gate to alert the road vehicle users. RDSO has developed KAVACH by collaborating with 3 Indian firms, duly ensuring the interoperability among them. The loco KAVACH of one make is interoperable with station KAVACH and trackside equipment of another make and vice versa for seamless train operations. Indian Railways takes pride in developing the indigenously developed technology in collaboration with the Indian firms to fulfill the Make in India mission of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Indian Railways' ambitious plan to implement train collision avoidance system, KAVACH, over its network is a stepping stone in building Atmanirbhar Bharat. A very good morning, sir. Just now we have covered the functionality of KAVACH and its usages in a crisp video of 10 minutes, sir. Now we will see other aspects of KAVACH, sir, implementation part and the coordination requirements in the field, sir. I am Munik Kumar, sir, IRSSC 2006 batch, sir. Now I will start the presentation, sir. So briefly, I will explain again, being the first time, sir, interaction section. I want to repeat the functionality in brief, sir. This is my animation part. So initially, all the station decals will be located in the relay room and which will be wired with the points, track circuit and the signal aspect information to station decals, sir. Whenever our loco decals, KAVACH fitted loco decals, sir, traverse over the RFID tags, it will receive the location information, sir. Once this information is received by the loco KAVACH, this will be sent to the nearby station, sir, through UHF communication. Presently, we are using the 400 to 470 megahertz band, sir. So after establishment of the secured communication between the station decals and loco decals, station decals will send movement authority and approaching signal aspects to concerned loco KAVACH. So after receiving the movement authority and signal aspects, loco KAVACH will detect the required speed and current speed. If there is a difference between these two things, loco KAVACH will initiate the brake application, sir,
as per the scenario. This is briefly about the TCAS functionality. Next, these are the figures of RFID tags installed over PSC sleepers. As already covered in block section, at every 1 kilometer, we'll put RFID tags in redundancy, whereas in the station section, at every signals, berthing tracks at 2 points, we'll put these RFID tags. These are passive device which is programmed with absolute location details. This is the broader picture of TCAS. As I explained, from the relay rack, station TCAS will collect the signal information, and the same information will be fed to the radio modem and radio antennas. So that means at every station we must have the towers. The towers in the project 1 with the RDSO we have erected 30 meters height. Later it is advised to erect 40 meters tower, and the type of tower may be decided by the railways. Presently, South Central Railway is using the lattice type tower. Next, station master is provided a small operation cum indication panel that is called SMOCIP in the bottom. When during the emergencies, SM can operate this SMOCIP so that he can control the approaching trains. So this is the picture of Loco KAVACH. This has the onboard computer and RFID readers, loco radio antenna, and one driver machine interface, axial mounted speed sensors, and brake interface unit. So that means Loco KAVACH has all these parts. In addition to Loco KAVACH, we must have the brake interface unit depending on the type of the loco. So this is the picture of the RFID reader mounted under the loco for reading the RFID tags fixed on the PSC sleepers. This is the fixing arrangement of various antennas over the diesel locomotive. Here we are using 4 UHF antennas, one for the transmitting and other one for the receiving. Similarly, 1+1 configuration. So that means one complete set is for hot standby. Similarly, 1+1 set of GPS antenna also mounted over the diesel locomotives. So UHF antennas is meant for communication with station TCAS and other locos. So there won't be any direct communication between the station TCAS to station TCAS. That means station TCAS will communicate to loco TCAS, and similarly loco TCAS will communicate to station TCAS, and loco TCAS to loco TCAS. And there is no communication, direct communication between station TCAS to station TCAS as of now. And the main purpose of GPS antenna is for time stamping of the various packets. So in TCAS, we use RFID tags for positioning, GPS for time synchronization, UHF for communication between the station TCAS and the locos. So this is about the driver machine interface, which we have already covered, the various features of the driver machine interface. The beauty of this system is it has the cap signaling, which is very helpful in the foggy weather and other rainy conditions. At any point of time, anybody has any doubts, you can freely interact with me. Being the introduction section, you must have various doubts, and we are ready to clarify the doubts. So this is the total sanctioned work for South Central Railway. As of now, we are executing 1465 kilometers of section. In this section, we had 2 works. First one is 265 kilometers of RDSO work that we have completed in 2019. Second work is 1200 kilometers work that almost 1000 kilometers already completed, and balance would be targeted by March 2022. So in this, we have given this entire section into 3 packages: package A, MEDA; package B, HBL; and package C, Kernex. 50% is given to the MEDA, and 30% given to HBL, 20% is given to the Kernex. So for HBL and Kernex, they have almost completed their geographical part, and MEDA is almost completed 90%. Balance would be completed within 1 week. This is our progress of the 1200 kilometers. Each color will represent different divisions. Different, and the circles will indicate divisional interchange point, and colors will indicate different contactors. Next, while coming to the execution part,
we had to do some small survey. So those items I have elaborated here. So due to constraint of time, I will just quickly go through these items. What are the various items we consider for execution of the KAVACH? For station tickets, LC ticket, IBS, we had to see space availability in relay room, power supply arrangements, cable coverage plans. Similarly, whether it is a automatic section or absolute block section. Next, the main crux of the system is the criteria for selection of station tickets, LC tickets, RIU and tower location. So there are three parts: station tickets, LC tickets, RIU and tower. So for every station, we will put one station tickets. While coming to LC tickets, wherever communication zone is not available, there we are going for the LC tickets. That means first we have to know what is meant by communication zone. So we will put one tower at each station. As per the RDS spec and our experience, it will cover almost 4 to 5 kilometers coverage in one direction. So all the gates, signaling arrangements available within these 4 kilometers from station may be considered as communication zone. So these items will be wired to the station tickets through RIUs. So beyond this one, if LC gate is there or IB signal is there, those things will be covered, wired with LC tickets. So this is being the new item. I will cover item by item. Let us say there is a station with centralized DI or RRI, PI is there. So for here we have to put one station tickets and one tower. So next, interlocked LCs in the station section. That means traffic gates. All the inputs are already covered, so no need of extra station tickets and tower. While coming to interlocking LCs in station limits close to station with combined signals. That means these signals are under the communication range of the station tower. So these signals, these LC gates may be covered with RIUs. We can put OFC in dual path and we'll bring those functions to station tickets. So next point, fourth point, midsection interlocked LC gates or IBS, which are far from the stations, and these are not within the communication zone of the station tickets. So we have to put one LC tickets for these type of gates and IBS. So wherever we put LC tickets, there we have to put one separate tower. For whereas item number 3, these items are covered under RIU. So these RIUs are connected to station tickets. This is already under the communication zone. Hence, no need of separate tower. Whereas for item number 4, these signaling installations not under the station tickets tower. Hence, we had to put one separate tower to cover these signaling items. So fifth, item number 5, station with distributed EI with OCs and end cabins. Here also we have to put station tickets at a centralized location and RIUs at the end gumtis. We have to connect these things by available dark fiber, or we have to lay the separate dark fiber. Similar is the case with item number 6, distributed EAs at major yards with multiple EAs. There also we have to put one station tickets or multiple station tickets depending on the scenario. This is the criteria for selection of STCAS, LC tickets and RIU and towers. So after doing the survey, we have to draw this line diagram. From this, we'll know that what are the various STCAS requirement and LC tickets requirements, towers requirement, RIU requirement, and cable laying requirements. Next, while coming to the auto section, we had to do more survey in the auto section, because in the automatic signal territory, we will get the signals more frequently. So we had to think many auto signal hut is available or any power hut is available. Power hut means where IPS is accommodated. And all these automatic signals are available within the auto hut, or we had to bring, and OFC is available in section or not. So based on this one, we have to work for the requirement. So as we discussed, in absolute block section, there is no need of continuous communication. So from station up to 2 kilometers beyond distant, communication is mandatory. So beyond that, that limit, communication may not be required for KAVACH working. But whereas in automatic block section, we must have the continuous communication. So let us say if any tower covers 4 kilometers range, so block section length is
more than 8 kilometers, then we had to put one additional repeater tower in between. So in the automatic section, we must ensure at least 2 kilometers overlap communication zone to have the smooth communication handing over from station 1 to station 2. Otherwise, unnecessary breaks will be occurred. So to have the redundant data within the automatic section, we will put duplicate RIUs in the block section. So how to connect these RIUs? I have shown in the block diagram. Generally, as per the RDSO spec, we will connect RIUs in double ring protection method. If you see in the central box, it is auto HUD 2. Here I am putting two RIUs, RIU 2A and RIU 2B. That means the information available in this HUD should be sent to both sides, being the HUD is located within the communication zone, overlap zone. So we had to send the same information to both sides. For that, we had to put duplicate RIUs. So how to connect these RIUs? This is already shown in the RDSO spec. Next, in automatic section, we encounter some peculiar problem. Station kilometers and physical interdistance are little different. That's why we have faced this problem. And after that, we have done the foot survey. So we have mapped the exact locations to the application logic of TICAS, so that at exact locations we can have the application of break. That means in the pole it may written that it is kilometer number 13/2/3, but once you physically measure those things, the distance may be different. So that may be accounted by doing the foot survey. So those exact figures may be configured into KAVACH software to overcome these offset problems in the sections. Next, the various documents required as a inputs to the TICAS system and various output documents are shown here. So here, absolute location information, gradient information, ESPs, SAPs, table of controls, circuit diagrams, working timetables, PSR, and traction mast information should be given to the contractor. Based on this information, contractor would supply RFID tag layout plan, RFID tag data, and our TICAS table of control, TICAS relay interface circuits, and time slot scheme, and RFID tin numbering scheme, and section roll diagrams. This is the input. On my left side, you can see the input documents to be given to the KAVACH vendors. On outputs, what are the deliverables by the KAVACH vendors? This is the process flow. What are the different process involved in the KAVACH? For various, first one is absolute location measurements. Based on that one, you can prepare the RFID tag data. After that, programming of RFID tags, installation of RFID tags, verification of RFID tags. These things may be given to the KAVACH system. So all these inputs, various process are required. In a graphical way, we have represented here. Next, the various issues, other issues we encounter is sometimes in bit after having so much of survey, we may encounter some LC gates may be closed, some LC gates may be interlocked. So these aspects may be taken into account. So concurrent management may be followed. So we had to have the eye on the upcoming signaling alterations in the section. So we have to, depending on their time of completion, we have to accommodate those modification into KAVACH systems. So other one is shifting of signals, all those things. These are comes under the modification to signaling systems. We have to consider these things for KAVACH design. Next, in the KAVACH, the major part is time consuming and the long lead item is tower. Being a new item to SNT, I will focus more on this design and design part of the tower. So first we had to make the tower design basis. What is meant by tower design basis? So we had to first see, as per the geographical condition, what is the wind speed of the section. Next, soil bearing capacity, factor of safety. So in Southern Railway, as per the microwave code, we are following the factor of safety as 2.0. So recently RDSO has standardized this wind speed as 180 kmph for all zones. This may be varied from zone to zone. In the subsequent slides, I will show that one. So approval process.
We had to get these designs of towers by third vendor. After that, these tower designs should be proof checked by the third party like CPRI or IITs. So after proof checked by these third parties, we have submitted our design documents to Chief Bridge Engineer of Southern Railway. So we have obtained approval for structure as well as foundations for various soil bearing capacities. These drawings generally would be OEM specific. So after getting all these things, we will give fit for construction at the field. So based on this, OEM will start construction of the tower at field. So this is the wind zone defined. Based on these wind zones. So let us say yellow zone indicates 140 kmph, blue zone indicates 160 kmph, green zone indicates 170 kmph. So based on this one, we can take the concerned wind zone of the project and we can adapt this as our parameter for the tower design. So on the right side, you can see these towers are designed by the OEM and proof checked by the third party. That is CPRI Bangalore in this case. So after proof checked by the third party, we have submitted our drawings to CBA office. CBA office has given the approval for various structure as well as substructure. Foundation we call it as a substructure and tower we call it as a superstructure. So on left side, you can see foundation designs for various SBCs. SBC means soil safe bearing capacity of the soil. So here you can see 50 kPa to 200 kPa, different designs are there with water table and without water table. So after that one, we had to do the survey of radio survey. In those geographic conditions, we have any obstructions or not. So this can be done by the one preliminary software is there that is called LigoWave. With this LigoWave, we have done the RF link calculations for identifying the tower locations. So I just covered the design part. For erection part, you have to decide the site location. For that, we have carried out interdepartmental survey at the field and we have taken their approvals. And finally, after obtaining this one, we will start the erection at the field. So initially, before starting of our foundation, we will collect the soil samples and we will send it to the lab. And after getting the lab result, we will adopt one appropriate foundation. Then we'll start our foundation part. So this is the various steps in the foundation part. First one is site preparation. Next, plain cement concreting, steel inspection, reinforcement, and various lifts. And as part of this one, we had to do the cube tests. So this is the various steps involved in the foundation. So this is the final stage. On my left side, you can see CAP, that means cast in part. So this part of a tower is casted along with foundation. So hence it is called as cast in part. On right side, during the various concrete stages, we had to do the cube tests. So on these concrete cubes, the location data and dates are mentioned. So this is about foundation part. Now we have to do the execution of the superstructure. That means actual tower. So this execution may be done departmentally if you have the sufficient ADNs and IOWs or bridge inspectors. Otherwise, due to a shortage of the department staff, we adopted RITES as our inspection agency for fabrication part of the tower. So fabrication in Southern Railway has been supervised by the RITES and erection part is done by the departmental IOW and our AST DSTs at field. The various steps involved in the execution of the tower superstructure are RITES inspection as per the approved QAP from raw material to fabrication. So railway should prepare one QAP, quality assurance plan. We had to approve that plan. We had to give that QAP to the RITES call letter. As per this approved quality assurance plan, RITES will carry out their inspection. They will clear the structures. Once RITES inspection cleared, then we have to transport this material to the site and we will see some few tests at the site by IOW or bridge inspectors before erection. So we had to see structural steel inspection, tower erection, members tightness check, verticality check and painting as per the norms.
preparation of site folder and documents for ready reference. So these are the various steps involved in the rights inspection. In the bottom, inspection site. So once after the trial assembly at the fabrication factory, we had to see the final clearance at the site by checking all the metals have reached the site, vertical test and torque wrench tests. So these are the sample inspections of rights. Initially for raw material, they will do the raw material inspection, that is called stage inspection. After that, once the material is fabricated fully, then finally they will clear this by final IC. So these are the various other tests being conducted at the field. So on the left side, you can see the erection by manual erections and torque wrench test. And finally, we had to see this erected tower is vertical or not. That is with vertical test. So after vertical test, we can have the primer coating, and after that 2 coats of painting. After that, the final structure would be looking like this. So this is about the erection of towers for KAVACH. Next we will see onboard KAVACH. That means loco TICAS equipments and their associated equipments. So this is the various types of electric locomotives. On the top, you can see WAG1, WAG4, WAG, WAM, WM4. These are obsolete now. Presently, WAG7, WAP4, WAP7, WAG7, WAG9 are in working. So in the G, WAG7, that means goods locos. WAP4, that means P means passenger locos. So WAG7 and WAG9 are goods locos, and WAP4 and WAP7 are passenger locos. So in the middle line, you can see WAG7 and WAP4. These type of locos have IRAB type of brake system. So our BAU should be IRAB type brake system. In the bottom, WAP7 and WAG9. So these will have different brake system. We covered in the previous slides, that is microprocessor controlled. So there are 2 types of brake systems. I will explain the next slides. Similarly, electric locomotives. In the top, these are little old locos, and in the bottom, these are the latest locos. So these top locos we generally call as ALCO locos, which will have the IRAB type brake interface units. In the bottom, we will have the CCB type brake interface unit, and these locos are HHP locomotives. So these are the various types of brake systems available. On left side, you can see IRAB type. So old locos will have this type of braking system. Present locos, modern locos will have CCB or E70 loco system. E70 is mainly for electric locomotives. WAP7, which is majority in Indian Railways. All the passenger locos, majority part is P7. So P7 locos will have E70 type, and this would be brought from Fevli. So these BAUs will not be manufactured by the KAVACH OEMs. Only KAVACH OEMs will manufacture IRAB type BAUs, whereas CCB and E70, this would be bought from the third vendors. So E70 is from Fevli and CCB from Norbremse. So what is the holistic considerations of onboard KAVACH? So before fitment of these things, railway should take the decision on what type of locos we have to put this KAVACH. The various points we considered for our final allotment of locos, I just narrate these things. Type of stock available with us, Southern Railway: diesel, electric, EMUs, demos and memos. So type of BIUs: IRAB type, E70, CCB and EMU BI. In EMUs, the braking system would be little different. That is called EP braking, electro-pneumatic braking. So next, holding of each shed. So depending on the implementation of KAVACH, what type of locos will run, which is a concerned loco shed, based on those you can take the decisions. Next, capacity of sheds. So how many bays are available and what is the schedules of IOH, POH. Next, fitment plan matching with IOH, POH schedules.
So as per the IOH PO schedules of the locos, we have to match our fitment plans so that we can get that concerned rake. We can complete our fitment of KAVACH within 7 days. Next, space availability inside loco for equipment. That means, as we covered in the previous presentation, even though in the RDSO fitment plans, it is shown that some space is earmarked for the KAVACH, whereas in reality, those space would be occupied by some other application. So like that, in WAP4 locomotives, whatever space available earmarked for the KAVACH is already occupied by the HOG implementation. So for that, we had to do the survey before allotment of these locos. So based on this availability of space, we can go further. So next, locos fit for passenger, goods, or both operations. We have to take the decision whether we want to put our KAVACH in passenger locomotives or goods locomotives, depending on the number of quantities sanctioned. So initially, in our project 1, we have erected all KAVACH in only goods locomotives. Later, we want to fit KAVACH in passenger locomotives. Like that, beforehand, we can take the decision. Accordingly, we will get the allotment of locomotives. Next, allotment ratio for TICAS OEMs shed by type of loco BAUs. So depending on the BAUs and depending on the approvals of the OEMs, you can allot them. As of now, we have 3 OEMs for KAVACH. In this, Kennex doesn't have the approval for IRAB type BAU. Only HBL and MEDA, they have the approvals for IRAB type. For CCB and E70, all 3 vendors can procure from third vendors, that is Feveli and Norbremse. Next, targeted TICAS territory, works in progress, work sanction. All these factors we have to consider. So now presently, SC Railway wants to erect these KAVACH in EMUs and demos. Like that, depending on the policy of the railway, locomotives will be nominated. And the deployment of 25 kV RE traction also plays major role. If it is a fully non-RE area, then it is better to go for the diesel locomotives. Or if it is fully electrified area, then it is always apt to go for the electric locomotives. Depending on the type of the RE available there, decision may be taken. Next, nomination of locos plying the section with approval of GM, PCW and PCME. So this plays very crucial role, as if we don't get the approvals, then there may be chances for change of locomotives as per the different conditions. Initially, one may feel that it is better to put in the diesel locomotives. Later date, they may shift their decision and they may feel that it is better to put in the electric locomotives. Like that, there may be shift in the decision. That's why it is always better to take the approvals before calling the tenders. So priority of loco fitment with approval of PCOM, nomination node officers. Actually, board has given some guidelines. We had to have some SAG officer level core committee at each zone for implementation of KAVACH smoothly. Next, all these points are very technical, so I will just skip these things. Next, type of BI is available. Universal BI IRAB. That means the primitive type of BI available with us is IRAB type. All these IRAB type would be manufactured by our KAVACH vendors. These IRAB type would be fitted into WAP4, WAG7, WDM 3D and WDG 3A. So one more issue is our KAVACH vendors have limited quantity approvals. This is first time they have manufactured. RDSO has given quantity limit of 20 numbers for MEDA and HBL. After completion of 6 months trial, this limit would be enhanced. As of now, 20 for MEDA and 20 for HBL. Next, we faced some space constraints in 22 series of WAP4 and WAG7 locomotives. So, loco sheds will expect that our KAVACH system should be modular in nature, occupies less space. Accordingly, we had to inform our OEMs. RDSO approved loco fitment layout diagrams are provisional.
needs loco survey for space requirements. As we covered, even though some space is earmarked for the KAVACH, at that particular loco, the space may not be available. So we had to do loco specific survey. So while coming to E70 and CCB type BAUs, so these are fitted into three-phase electric locomotives E70, that is WAP5, WAP7 and WAG9. So BAU from NOR Bremse for CCB and Fevely for E70. Actually, the for lead time is almost 4 to 5 months. We had to consider this time factor also for execution of the project. First time working with CCB type BAU for TICAS OEMs. That means we have tested IRAB type BAU in Southern Railway and E70. CCB we are yet to test, and this will take little time. While coming to CCB of HHP diesel locomotives, development of TICAS BAU interfaces are under process by RDSO. So this may take little more time for HHP diesel locomotives fitment. Muni, you can go a little faster. Yes, sir. And skip. Yes, sir. So this is about interagency deficiencies, sir, dependencies. Now I request CST projects of Southern Railway, sir, to complete this further part of the presentation, sir. No problem. Sir, as we seen, we have a lot of departments involved in implementation of this KAVACH project. For example, if we take CLE and CAC, where we are to get the nominations of the locos, and then we have to fit it, and then we have to conduct trials and signing of pre-commissioning checklist. Those things are involved. In this case, CMP diesel is involved for diesel, CAC is involved for EMUs, CLE is involved for electrical locomotives. So that's what we have to have a close coordination with them, and we have to keep them on board, particularly for in the form of nodal officers. CE operation is once the KAVACH is implemented, he will only run the train. He is in charge for the drivers and loco pilots and other crew. So he has to give the optimal design parameters. For example, if the train is having some problem while dealing with the KAVACH operations, he will give the feedback. Then we have to give loco pilot instructions in the form of handbook, diaries, all those things and all. We have to see that every time we have to go for a crew lobby center, and then we have to see that interaction with the drivers, give some sort of training based on the CE operations requirement. In the operating department, we are keeping one SMOC IP inside the station master's room. So we have to see that the changes will be made in the SWR. So in that case, we have to see that again, G&S are also recently we have modified, and we have already sent the proposals to the board. Those things we have to keep talking to CTM, CPTM, or CTM, GG and all, we'll call it here. Apart from that, for removing the locos, for the trials and all, formations and all, everything proposals goes through CTM only to division for train parameter configurations and those things. Then while doing initial survey, we sometimes do drone survey also initially, and subsequently for the fixing of all these RFIDs on the track, we have to have accurate measurements. Initially it was decameter, means every 10 meter accuracy. Now it is 1 meter accuracy with a 4.0. These for operating of those drones, we need to have certified drone operators with the help of RPF only. We have to operate those things. That will be taken care by RPF. Then RDSO, really you can say everything, whatever technical doubts and all, they will take care, and we have to handhold them. They will handhold zonal railways for every movement in case of anything and all. For example, if we want to change any test procedures are involved in supplying some material, or any problem is there, we have to refer them, and they will give the solutions. The next one. And the engineering department, as you know, we are working along with the track, fixing the RFID tags, and then give the path clearance for cabling and the erection of towers, then CB approvals for erection of towers. All those things, engineering department, you have to have a close coordination. Then finally, the other departments also involved. Other department, for example, Ministry of Civil Aviation, that is CRS. Before going that one, we need to have some CRS sanctions for deployment of KAVACH equipped trains into the service. So we have to take care. Apart from that, whenever we are erecting the towers in the vicinity of airports, there height restrictions will be there. For example, you are close to airport, they will not allow you to erect 40-meter towers. For that, what we have to do it, we have to only have 15-meter towers, and we have to do the redesigning. All these things, we have to get clearance from Ministry of Civil Aviation
or airport authority before erecting the tower. If you go to the communication, any tower which is more than 30 meters, and all, we have to get a SACPA clearance. Apart from that, the WPC license clearance, we are using the spot frequencies, 5 spot frequencies. Recently, of course, they have changed it. All those approvals and annual licensing fee and all, we have to pay to the WPC. That is dealt by, of course, Railway Board and here in the WPC wing of this one. These application charges and all, we have to keep it as a part of the estimation provision. Means by and large, you can see we are, every department is involved in the railway to see that success of the KAVACH, which is being monitored by the highest authority, that is MR. Next, please. But here, some limitations are there, which positively I want to tell, so that people will not expect that KAVACH will do everything and all. For example, initial booting time will take some time, like not 2 minutes. It is less than 90 seconds for the first time. So driver has to enter. He has to select the train parameter, like what is the light engine, or whether it is a 22 bogie or 10 bogie and all those things and all. He has to enter. He has to select, and then he has to go in the system shunt mode, and then he has to take the train. Initially, when he is freshly starting from the originating station. Then in case of suppose signal is defective, let us say, he has to get that advance authority, and then he has to move his train. So for that, normally what will happen in case of any signal is at danger, he will simply get it and he will go. But in case of KAVACH trains, he has to select override mode. For example, override mode, unless you select the override mode, train will not be allowed to go beyond the just immediately after the passing the danger signal. These things and all will become what you can say sometimes headache to driver, but he has to follow the instructions because it's also a supervisory system which will protect the drivers working. Drivers, in case of any failure of drivers' actions, particularly when he has done a SPAD and all those things, it will be helpful. So he has to bear with these limitations and boundaries of TCAS. Then we are telling about the head-on collision. System will work head-on collision once the communication is available between the two locos. Means loco to loco communication is to be available, UHF communication. Suppose let us say it is a thick forest, or we are having for example say curve and or heavy urbanization. So sometimes signal may last. That time we may not get proper signals between the locos, so we can't guarantee 100%. Moreover, this particularly head-on collision, lead-end collision, all these are SIL0 functions. It's not a SIL4 functions. In case of temporary and NI working and all, we have to see that whether KAVACH will not work, because RFID tags will be removed. So accordingly, we have to see when system is working, signal system is working, then only KAVACH will work. Before that, it will not work. All those things we have to have some limitations. Next. Then for the purpose of new railways, we have issued a JPOs and compendium, and all the soft copies we have shared with the railway. Apart from that, we are having some more, what I can say, videos also, then working also, you can come. We have established working systems in the ERSET. All those things we have given, and then already established, and then you can come and see, or you can have soft copies with us. In order to keep the people with good skills, we have already established a full-fledged lab. So all the makes, all the loco and loco scenarios, and then stationary TCAS, PIUs, all these things are readily available. At a time, we are having 6 stations and 6 locos. So we can come to reset or some 2 days visit here, and you can see the implementation part for proper execution of KAVACH in your stations. Next. Thank you very much. Just I have given, Muni has given a nice idea of brief, so I have added only small thing. You can have doubts if required. We'll answer anything. इसमें काइंडली ये बताएं कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है साउथ सेंट्रल में, बिकॉज वी वर डिस्कसिंग सर्टेन इवेंचुअलिटीज, सर्टेन ऑकरेंसेस कि सपोज एक जब ट्रांजिशन होता है तो कुछ लोकोमोटिव्स या कुछ ट्रेन्स दे विल बी वर्किंग विद TCAS system, and there will be certain trains, certain locomotives which do not have that KAVACH instrument. In that case, if one of the train derails and it infringes the other line,
how would it react? For that matter, if one train in one train, the system has been isolated. Yeah. This is a very simple, sir. Suppose if I give full money and a full resource also, you can't do everything in one day. One day, I'll say in a particular frame of 3 months or so. We have to gradually only put KAVACH, or we have to fit this loco KAVACH inside the locos. Like that, we have to do entire say track kilometers. I don't know how much, say 2,000 or 4,000 track kilometers of your railway gradually only. It is not possible to deploy and having equipment like that. So once you identify particular section and all, you will get a lot of experience, particularly working of this one. So naturally, as on date, you are not having any production at all, zero production. Now you are worried about, I say 30% production or 70% production or something like that. It's better to have some more production than zero production. So we have to work like that only, sir. There is no other goal. Have you had any SPAD or any averted collision with the two trains or single train having KAVACH installed? No, you might have seen Minister himself has shown to entire public how head-on collision is avoided. Then with one loco minister and other loco CRB. So it is itself. That is one part. That is one part that the trial has been conducted successfully, because now you have been no, sir, you have operationalized the system. Any such problems. We didn't have any problems of that nature. We didn't have any untoward incidents where the loco KAVACH itself has done any head-on collision with other loco KAVACH fitted. Averted collision or SPAD. Especially because we find in real time in the real life scenario that some of the trains, they develop poor brake power while run, especially in goods train with mixed stock. Trains having only half of the rake with the proper brake power, half the rakes doesn't have brake power, or maybe driver is experiencing that the entire rake is not having any brake power. In that situation, because the brake application will be there to the system, but in that situation, there's a likelihood of train crossing the signal. So have you encountered any such situation? Yeah, you are absolutely correct. See, the basic working of KAVACH is like this. Suppose a signal, for example, you take the signal. If signal is wrongly showing instead of red as green or green as red, KAVACH can't do anything. KAVACH works whatever the signal is giving. KAVACH will take only inputs. It will not give the output to the system. Whatever the signal says, only it will obey it. Suppose signal is showing green. KAVACH also will take it as a green and then it will go. Because the inputs are parallelly given to this one. Like that is part one. Part two, take the locomotives. Locomotive poor brake power. See, the braking system, this also it gives a parallel application of brake through its own wisdom. So it can't separate the poor braking power, all those issues with respect to locomotive. So in this case, in case of any problem is there in the braking system or odometer system itself, it will identify and it will apply the emergency brakes. Not that the poor braking, it will identify and then it will do it. Am I right, Muni? Correct, sir. Yes, sir. Have you encountered any such incident while working over South Central? Since the system is have been last 4-5 years continuously working and all, would have such a failures where because of poor braking and all, certification of brakings are sacrosanct, and we didn't have such problems. Apart from that, particularly operating department, that is CE operations, then CTM, GG, and then CDVMs, CDEs, they are continuously also doing foot plating and giving a lot of notes. So we are continually improving our performance and moving more number of fitted trains. Though we told we have around 60-70 KAVACH fitted trains, hardly 7 to 8 will move because the different sections only is fitted, not fully fitted. So always we take the feedback and then we are either solving or involving RDSO, and then further we are doing it. This exercise is there, but we don't have real-time scenarios where we got a
averted accidents which the KAVACH could not prevent, those cases and all, particularly due to poor braking or any other signaling problem and all. So what it will does, like track circuit, any problem is there, KAVACH will say, I am not working well in advance, and it will ask you to go in a SR mode, is a staff responsible mode and all those things. Or it will not abruptly give you any wrong decisions. Before that itself, it will say that I am not working. Please, driver, you can go ahead with your own wisdom. Like that, it will detach itself. Mr. Rao, so such instances are not there, sir. Mr. Rao, how many isolations or false braking are reported on daily basis? No false breakings at all. No false. See, breakings and all, there are two types. One is one will call as unwarranted breakings. Unwarranted breakings, and normally unwarranted braking means suppose the driver is supposed to get a 30 km/h and say while negotiating the turnout. That time, if he is going 30 to 35, it will give the warning. Let us say he is going for 35.1 or 36 km/h. Then naturally, system will try to do intervention, and then it will apply the full service brake initially. Suppose the driver is still going ahead with say some more speed without reducing the speed, system will intervene and it will go. That is called as a warranted braking only. It is intentionally, KAVACH is doing its intended function. Otherwise, as a system failure, system is not working and brake is applying and all, those cases are now fully minimized. Suppose there is a problem with relay contacts. For example, signal is showing green, whereas the particular green contact is not terminated properly in the KAVACH equipment, that is stationary KAVACH. That time we'll call it as a non-corresponding of signals. Means DMA is showing red because relay input is not come, whereas the actual signal is green. That time automatically brake will apply by the KAVACH, thinking that the signal is red. So those cases are also can be fully minimized by wiring with the EI to TCAS directly. Means we are totally avoiding in this project 10 stations we have already done it, are doing by March 31st. No relays will be available as such. Directly EI will take the inputs. That problems are still there now there, but it will be eliminated once you do in your project by having EI TCAS direct interfaces. But there must have been some reporting of some isolation. Isolation. Suppose the equipment is not working, KAVACH equipment is not working, radio modem is not working, communication is not there. It will go to the different modes particularly. We expect that the system will work on full service mode, FS mode. Instead of that, communication have no problem. मतलब कितनी frequency है ऐसी, कितनी बार report हो रहा है? Maybe on daily basis or weekly basis. No, NMS is live is there 24/7. What we are doing every month, we are giving a report to the relay board. For example, the performance is between around 90 to 95, not more than that. So we are having problems. These problems are attributed particularly due to poor communication, because tower height now yesterday we got instead of 30 meters, 36 meters we have to have tower. Some problems are there. Second thing, relay failures are a little more, particularly for the TCAS. We have not given separate relays. We have taken some other relays. Now, instead of that, in the new project, particularly 1200 kilometer project, we have a separate relay set. So those things are there. Means where we are having problems which we are now overcoming and trying to see the better working of KAVACH. Otherwise, we are having problems, particularly non-correspondence signals. Not that the system is unnecessarily doing breakings. No, it is intentional failures are there. Intentional system, no system is doing intended function, because that one operations are getting hampered. Those things are also there. Because the equipment itself is failure. Is this interface with station TCAS, is it available directly through electronic interlocking, or it is relay through relay contacts? Now, whatever we have done, let us say we have done around 112 stations plus say 30 stations. Now, in the current project, we are doing direct interface without any relays. Whereas earlier project, we are having relay interface. So that relays also, wherever spare contacts are available, only we have taken it. Now, in the new project, we are not doing. We are having a separate relay rack so that there will not be any interference with the existing signaling working. Otherwise, when ESM will come, he will touch the KAVACH relay contacts whenever he is not having existing contact free. For running the train is very important. His signaling work is important than KAVACH. So those problems we have avoided by having a separate relay rack, separate relay wiring. Now in the new works, wherever EI is there, EI to TCAS direct, no relays, absolutely zero relays.
पूछ लो सर AK Pathak Scenery TRO Kota. बताइए. So I have a question here, sir. Sir, this KAVACH is basically for avoidance collision. Yeah. So in the Indian Railway scenario, the head-on collision or spared or head-on collision, particularly collisions, are not so much as compared to the number of trains are running. The system will be more useful if we could introduce the, like we are braking every time we are braking, or in a abnormal situation we will break the system or we will stop the train. Then if we can introduce the notching up, or further we are controlling the speed as per presentations. If we can notch up speed or we can control the speed, so we can remove the loco pilot. That will be more useful for Indian Railways in context of the amount of the money we are spending on the KAVACH. So kindly, I'm here. The operation is available here only. See, we can maximum we can avoid a driver. Can avoid a guard by using EOTT or having an external what can say putting another gadget such that KAVACH will take care of a guard functionality. Or we can say ALP, that we are already taking care. ALP removal also is one of the points which we are pondering upon, and then particularly the operations and all, they are also thinking. Driver and all, that is called as a ATO. That is a different functionality. Automated train operation. We are only KAVACH is only ATP. Automated train production only. इसमें पाठक दोनों की ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है. ये जो सिस्टम है, दिस इज बेसिकली कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम. जो आप बोल रहे हो, दैट इज जो ट्रेन ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम, दैट इज टोटली डिफरेंट, व्हिच इज अवेलेबल इन मेट्रोज. ठीक है ना, व्हिच इज ड्राइवरलेस मेट्रो ऑपरेशन. सो टोटली दोनों चीज डिफरेंट. सर ये नेक्स्ट इसमें स्टेज का प्लान है. केवल इट इज जो एक एबनॉर्मल सिचुएशन में ब्रेकिंग इनिशिएट कर रहा है, और जो ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम टोटल डिफरेंट हो जाता है कि उसमें नॉचिंग अप एंड एवरीथिंग, मतलब वो ड्राइवर की जरूरत नहीं है, वो अलग चीज है, टोटली डिफरेंट. ये एक्चुअली सर नेक्स्ट स्टेज प्लान है. इनिशियली अभी हम लोग प्रोटेक्शन पे जा रहे हैं, देन वी विल गो फॉर ATO आल्सो. नहीं, बिकॉज ये सिस्टम जो आपने क्वेश्चन उठाया है, दिस इज बीइंग डिलिबरेटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट. ठीक है ना, बिकॉज दिस रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैव अप्रोच्ड it should be adopted, and there it has been brought out ki what are the differences. So as such, in the present scenario, it is not possible to interchange the two systems. दोनों की requirement, दोनों की objective totally different. That could be the part metro में. Please, plan is already in progress. We are ATP, our TICAS system, KAVACH system, we are integrating with the VCU, vehicle control system, and notches will up and as per the speed profile. This is in progress already. दूसरी चीज, but it will take time, about 2 to 3 years. ये है जो ट्रेन सिस्टम जो वर्किंग है, उसमें ड्राइवरलेस इट इज नॉट एडवाइजेबल इन द प्रेजेंट जो वर्किंग कंडीशन है, क्योंकि आप जो मेट्रो में है वहां पे बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, वहां पे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं आ सकती. यहाँ पे कोई जानवर भी आ जाता है, यहाँ पे कोई आदमी भी आ जाता है, कोई व्हीकल भी आ जाती है बूम तोड़ के. सो देन ये चीज ऐसी है जो कि अनकंट्रोलेबल है, और उसके लिए आपको एक मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत है. ही कवच के कार्यान्वयन में चुनौतियां और कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद. अब मैं आदरणीय DRM सर से अनुरोध करूंगा कि वे इस कार्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त करें. सॉरी, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अनुज नेमा सर को, डिप्टी CST प्रोजेक्ट कोटा. वे EPC टेंडर जो फ्लोट किया WCR ने, उसके बारे में प्रेजेंटेशन देंगे. राव साहब, VNM राव साहब, do you want to leave the meeting because there is some non-interlocking work also? Muni Kumar? Yes, sir. So with your approval, sir, we will leave this one because some NI work is going on, sir.
Okay, VNM Rao sir and Mr. Muni Kumar. Yes, you have. We will be requiring your help quite frequently now. Definitely, because sir. our tender will be opened in May, and thereafter execution will start. So we have gained lot of inputs from you, and we will be looking at this presentation which we are recording. So the recorded ones also we will see for this part of yours, and it has given us a lot of inputs that what we should do now. We can plan a lot of things. So for that, Rao Saab and Muni Kumar, lot of thanks to you. And Thank you, sir. We will be with you only. हम आपके साथ हैं. Absolutely. no problem. Thanks a lot for all the information shared by you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. फिर मिलते हैं बाद में. DRM, GM. Good afternoon, PSP, CST, sir, DRM, sir, CST project, sir, and all the officers attending this workshop. The idea behind this PPT is to get the valuable inputs from all the members attending this workshop, because we have defined the scope of the work, and we are still in the stage where we are learning and we are modifying the conditions. And we have already, in the last tender also, we issued some corrigendums, and now also we are in the process of modifying our EPC tender, because we have two things to learn in this tender. One is the EPC mode of tendering, and second is this KAVACH system, which is very new to us. So we are implementing this KAVACH signaling system in the main A route of Kota division from Mathura at extreme north to the Nagda station, which is at the extreme south. And although it is planned for branch lines also, but right now we have floated the tender only for the main line, which comes under the Delhi-Mumbai trunk route. So the this covers around 549 route kilometers, covering 40% of the KAVACH route from New Delhi to Mumbai. The maximum permissible speed currently is 130 kmph, and we are upgrading it to 160 kmph. It's a double line section. The block working is absolute block system. Again, automatic block section is already planned, and it has been sanctioned. So for tower erections, we are implementing in such a way that for in future, if we are implementing automatic block section, we'll not need to erect any new towers. There are at present there are 30 interlocked LC gates. We are commissioning 7 other LC gates. So total 37 number of LC gates will be there. Number of IBH is 40. So this KAVACH tender is 189 crores, and tender has been floated on 16th of February. Opening date is 28th May 2022. First pre-bid conference was held on 12th of March, attended by 6 firms representatives. The cost breakup mainly covers the KAVACH system, which cover more than 2/3 of the tender cost is covered in KAVACH, and the OFC backbone, the ancillary requirement for this KAVACH system, and tower and service buildings will be covered in this tender. So the main scope, detailed scope of work involves onboard loco KAVACH equipments in 87 locos. As of now, we have planned to implement this loco KAVACH in 87 locos of TKD, which are WAP7, although there is no finalization of this thing. And why we have chosen WAP7 is that the reason behind this is that this is having the highest speed potential of 130 kmph in WCR. For IR, the highest speed potential is 160 kmph for WAP5, but that loco is not available in any of the loco sets in WCR. So there are total 57 stations excluding Nagda and Mathura, out of which 7 are junction stations. There are 6 end cabins, 3 at Kota, 3 at Savai Madhopur, and through preliminary RSI survey, we have got 19 such locations where there was neither LC gate nor IBH.
But to get the full coverage, we'll have to erect towers and we'll have to construct buildings at these 19 locations. Then there are 37 LC gates, out of which LC KAVACH equipment will be installed in 6 LC gates and LC RIU equipment will be installed in 31 LC gates. Then 29 IBH KAVACH equipment will be installed at IBH and 11 IBH will be connected through RIUs. As per our survey, we have got 111 number of towers of 40-meter height, and 7 towers we are using which are already in existing stations, and 104 new towers will be erected. There are 58 block sections, and we are also laying 549 kilometers of cable, both up and down. So it will be double this quantity. And we are also using IP-MPLS technology as per the recent guidelines from Railway Board, which we have got last year. So we are implementing this IP-MPLS routers also along with this project. Then the number of KAVACH service buildings will be 109. In our special conditions in the tender, we have clearly specified that RDSO specification version 4 is already under development and is likely to be finalized, as sir has already told. So we'll commission the project with version 4 only. For WPC and SACFA clearance, the application will be filed in the name of Railway. The frequency has already been allotted by DOT. And for this, actually, we need to have the final RSI survey conducted by OEM, so that in the application, we'll have to specify what station, what location will have what frequencies. So we are waiting for the finalization of the tender for this. And KMS charges already told by RDSO that we are dropping this thing from our tender, although this was part of the sanctioned estimate, but single server, sir, key management system which will be there at Sikandrabad. Ji sir. Haan sir. So that will cater for the whole Indian Railway. So we are dropping this thing. Only the programming part will be done by the contractor. RSI survey, it was a novel thing for us, which we have conducted, and it was a very nice tool. Lego Wave and Google Earth, 2 softwares that we used in this. Without erecting actual towers, virtually through the software, we have erected 40-meter towers at stations, and then we got the profile for the radio coverage. And for this Nagda and Rohalkhurd station, if we see through this, this is the 60% Fresnel zone, which is designated in blue line, and this is the topography of the land from Nagda, and this is the topography of the land from Rohalkhurd. So what we have got is 3 kilometers of dead zone where there is no coverage. So it was not desired. So we are erecting one new tower at IBH. So after erecting tower at IBH, we are getting an overlap. If you see the upper graph and the lower graph, this pink area is more than the overlapping of the pink area is more than 2 kilometers. So this is the desired thing which we want as per the RDSO guidelines. So based on this, we are erecting one more tower at IBH. Similarly, we have conducted for the whole section. I have kept these 2 samples for our knowledge, because it's a very good tool and we should use it frequently. Again, for Rohalkhurd and Mahidpur, what we got is 0.9 kilometer of dead zone. So again, we have erected one tower at a location 3.9 kilometer from Rohalkhurd. Yes, sir. Yes, sir. Sir, actually, in addition to it, yes, sir. Yes, sir. So based on this, we have calculated our tower requirement, although it was very less before this RSI survey, but after the survey, we got the actual near about value which will be implemented. And all the towers are of 40-meter height except for Dara Kavalpura section, because that particular section of 8 kilometers is having 6 to 7 towers, because that is very section is very having lots of curves. Yes, sir.
सर हाँ सर दरा सर सर वो हाँ सर एक्चुअली क्या है कि सर दरा कवलपुरा जैसे सेक्शन देखें तो उसमें सर 7 टावर लगाने पड़ रहे हैं उसमें, तो उसमें सर कवरेज ही 300 मीटर आ रहा है, तो वो मतलब एक्सेप्शन हैं उसमें। तो सर एक्चुअल रेडियो कवरेज हम लोगों ने सर कंडीशन डाली है कि इट शुड नॉट बी इंफीरियर देन व्हाट इज मेंशन्ड इन द प्रिलिमिनरी आरएसआई रिपोर्ट। सर दीज आर द माइलस्टोन्स। 10% of the contract price, since the contract is having commissioning based payments. So within 200 days, we are planning to commission around 6 block sections. Since total 58 number of block sections are there, 10% of that, around 6 block sections we are planning to commission within the first 200 days of after awarding the contract. Then after within 350 days, 35% of the contract price. And third milestone is 550 days, where we'll cover 70% of the contract price, and the completion period is 700 days. Yes, sir, around 2. Thank you. थैंक यू सर। अब मैं सभी अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वे कवच के संबंध में अपनी चर्चा, विचार विमर्श या प्रश्न कर सकते हैं। 15 minutes for discussions. So supervision of this work is like by a central project or by engineering department? हाँ, नहीं तो अभी क्या है जो नहीं सर, like sir, execution of work like erection of towers, erection of buildings. नहीं जो कवच से रिलेटेड है, टावर भी है, वो तो एसएनपी देखेगा। बाकी काम सबके अलग अलग है, तो सब कर ही रहे। हाँ, वो सब अच्छा वो राइट हो सकता है। सर प्रेजेंटली क्या है, हमने टावर डिजाइन हो गई है। साउथ सेंट्रल रेलवे में टावर डिजाइन नहीं थी, डिजाइन बेसिस अप्रूव हो गया है। आपको सॉइल अप्रूवल लेना है, एंड इट इज ऑलरेडी आई हैव गिवन कंप्लीट कंपेडियम, ऑल द टावर डिजाइन वी हैव गिवन इट। just like OHE में फाउंडेशन, फिर वो जो कंसर्न टीआरडी वाला है वही देखता है, तो उसमें भी अल्टीमेटली वही है कि जो डिजाइन ठीक है वो आपने डिजाइन प्रूव करा लिया एंड सीबी से अप्रूवल हो गया जैसा भी स्टैंडर्ड बना है, बट अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन सुपरविजन पार्ट हेल्प वो एसएनटी को करना। सर एक्चुअली ये रेलवे बोर्ड से लेटर इशू है, व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ईच डिपार्टमेंट एंड इट इज इशूड विद द अप्रूवल ऑफ द MRS and MST. This is already issued in 2018 सर। इस है हाँ, एंड सिग्नलिंग को ही देखना है, लेकिन कैसे करना है, आपको टीम फॉर्म करना है, नोडल अफसर करना है सीजी लेवल में, एवरीथिंग इज डिफाइंड इन दिस। ठीक सर 2-3 क्वेश्चन है मन में। एक तो आरएफ फ्रीक्वेंसी पहले तुषार सर इसके अंदर जैसे अभी प्रेजेंटेशन में कवर तो किया था, अगर डिफेक्टिव सिग्नल हो जाता है तो हम लोगों को अभी भी मैनुअल अथॉरिटी भेजनी पड़ेगी या डिजिटल अथॉरिटी है कुछ, बिकॉज नाउ द कम्युनिकेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द लोकोमोटिव एंड द स्टेशन। Yeah, I will answer this question. Now the manual authority is there, but RDSO is working on the paper mode authority, which is not yet, of course, finalized. We can say that even though train is driver knows through authority, the TCAS also should know. No, that's what we will set the TCAS into override mode for passing signal danger. So manual authority is compulsory. मैनुअल अथॉरिटी रहेगी, अगर कोई सिग्नल फेल हो जाता है उसी के लिए ये ओवरराइड मोड उसमें दिया रहेगा। तो सर मतलब द बेटर थिंग इज दैट वी मैनुअल अथॉरिटी हम लोगों को इशू नहीं करना। नहीं, इसमें जीएनएसआर को ओवरराइड नहीं कर रहा है सर, लेकिन वन ऑफ द इन द प्रेजेंटेशन दे हैव कवर्ड दैट नेसेसरी चेंजेस हैज टू बी मेड इन द जीएनएसआर, तो इसको भी चेंज करा दें। नहीं यार, हर चीज हर सिस्टम हर चीज के लिए नहीं है, मतलब वो आप जो अभी आप बात कर रहे हैं कि वो पूरा ट्रेन ऑपरेशन ऑटोमेटिक हो गया तब अलग बात है, उससे स्टेज पे होगा, नॉट एट दिस स्टेज। सर आईबीएस अगर फेल होता है तो
नहीं वो IBS है या ऑटोमेटिक सिग्नल है? IBS में जैसे बात करते हैं वो Yeah, it will work for all the IBS. It will be having all the features of automatic block signaling, absolute block sectioning. Everything will be covered, and it is having its rules how to work in case of failure in auto section, in case of failure in IP signal. All these things system will take care. Only that authority, what sir is telling, it has to be taken care for the intended function of KAVACH. Everything, every problem you can't solve with one system called KAVACH. GNSR में चेंज नहीं है। GNSR में जो प्रोवाइडेड है ऑटोमेटिक को आप एक मिनट और रात में 2 मिनट बाद आप क्रॉस कर सकते हैं रेड सिग्नल, तो वो सारी चीजें हैं वो उसमें भी फॉलो होंगी अनलेस दैट GNSR इज रिवाइज्ड एंड वो सिस्टम ही डिफरेंट है। सर GNSR पे भी कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है। नहीं GNSR भी तभी रिवाइज हो पाएगा जब आपका सिस्टम ही चेंज होगा। यस, मतलब उसमें ये चीज शायद नहीं है, बट जो कमेटी बोर्ड में बन गई ऑलरेडी उसमें No, we have submitted the report already. EDs है। I am the convener. We have already submitted the report. Board is working on it, and we are adding as an annexer or appendix to SR, GNSR, because we are having a train working with KAVACH in Southern Railway. That's what it is given. But as a whole, as SR told, it will be implemented once all the railways are provided with KAVACH. Right. Harish, सर ये RF फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा तो उसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस किया जा सकता है क्या? मतलब एक्सटर्नल कोई जैमर लगा दे तो भाई कम्युनिकेशन ही बंद हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 GPS सिस्टम है। GPS सिस्टम में एक सबसे बड़ी खराबी है कि जब फॉग होता है, सैटेलाइट सिस्टम पे काम करता है ये, तो जब फॉग पड़ता है तो सैटेलाइट कम हो जाते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। आपने देखा होगा जितने स्प्रेड हुए हैं सबके पास फॉग सेफ था, फिर भी स्प्रेड हो गया। तो ये इसका टेक केयर किया किसी ने कि नहीं किया? और नंबर 3, सपोज स्प्रेड होता है इक्विपमेंट के बाद, तो रिस्पांसिबिलिटी ड्राइवर की होगी कि इक्विपमेंट की होगी? पहला जो सेकंड वाला है ना, तो सेकंड वाला है तो वो पहले भी क्लैरिफाइड है, जब फॉग सेफ में भी है। अगर स्प्रेड होगा तो यार रिस्पांसिबिलिटी ड्राइवर की डन अवे नहीं हो सकती, ठीक है ना। और रही बात ये कि जो जैमर वाला है वो थोड़ा बताएं आप। Actually, sir, jammer के लिए हम लोग KMS system है. Jammer will not work because this is the totally secured system. If jammer is there, system go in the fault mode, and you this customer मतलब safe side होगा. दूसरा क्या है? GPS. GPS is not used for communication. It is only used for the time synchronization and half an hour. If GPS is not available, no issue will come. What he is saying कि जो जैमर है, इवन जो आपका कम्युनिकेशन लोगों से टावर के बीच में हो रहा है, तो जैमर तो ये करता है कि वो जितना भी कम्युनिकेशन है सबको वो ब्लॉक कर देता है, तो वो भी ब्लॉक होगा। सर वो सिस्टम ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे सिग्नल अवेलेबल नहीं है, तो बेसिकली यही होगा कि उस एरिया में सिग्नल अवेलेबल नहीं रहेगा, तो फेलियर मोड में जाएगा फॉर आफ्टर सम टाइम। उतनी देर वेट करेगा, इफ अगेन हमारे पास पैकेट रिसीव नहीं हो रहा है तो वो फिर फेलियर मोड में जाएगा। सर I will tell. Suppose 30 second. सर इसमें सर जो आपने वीडियो फिल्म दिखाई है हमको, इसमें ऐसा लग रहा है कि असिस्टेंट ड्राइवर कंप्लीटली स्क्रीन पर डिपेंडेंट है। नो, नाउ न्यू लोको नहीं सर, प्लीज आपने जो देखा है उसमें मेरे ख्याल से वीडियो में जब लिया गया है तो इनिशियल का जो लोको में फिटमेंट हुआ है DMI का, वो असिस्टेंट ड्राइवर साइड में, इसलिए ऐसा लग रहा है। बट अभी क्या है, अभी एज पर जो लोको डिजाइन और वो प्लान, वो फिटमेंट प्लान है, उसमें ये क्लियर है कि जो भी ये DMI इंटरफेस लगेगा वो ड्राइवर के सामने लगेगा, असिस्टेंट लोको पायलट के सामने नहीं लगेगा। अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। वो ट्रायल के टाइम में था। दोनों ट्रैक देखेंगे या स्क्रीन देखेंगे? नहीं सुनो, अभी भी आप लोको में DDS तो होता ही, अभी भी होता है। तो उसमें मतलब जो भी इक्विपमेंट होता है, इट इज सपोज टू बी ऑन द ड्राइवर साइड, ALP साइड में नहीं होता है। वो बाद में उन्होंने शुरू में लगा दिया होगा, वो ट्रायल पर्पस से लगा था इसलिए। एंड जो ये है वो असिस्टेंस के लिए ड्राइवर की, ड्राइवर को स्पीडोग्राफ भी देखना होता है, उसको जो BP FP गेजेस, ड्राइवर के पास बहुत सारे टूल होते हैं, तो उसको दोनों चीजें देखनी है, वो भी देखना है, अपना डेस्क भी देखना है, आगे भी देखना। अच्छा, जो रूफ टॉप एंटेना आप लगा रहे हैं, दिखाया था फिल्म में, फोटो में आपने, वो वेल्डेड रहता है, फास्टनिंग है उसकी? क्योंकि वेल्डेड होता है।
We will weld in Welded है. उसका frame welded है, sir. उसका ऊपर Welded fix है. करता है. That's all how we are keeping all this on in the shed itself. We will do with the assistance of shed officials. ऐसा जो कम्युनिकेशन फेलियर का है, कम्युनिकेशन फेलियर 30 सेकंड का हुआ, एलएस मोड में जाता है. वी हैव टेकन 30 सेकंड टाइम बिकॉज द communication is happening every 2 seconds. Means regular packet is going every 2 seconds. Suppose 15 packet is not received, then it turns to LS mode up to moment authority or SSP. Then after it go to, if that is also communication not received, then it go to SR mode. SR mode and he has to acknowledge it. कहने का मतलब ये है सर कि ऐसा नहीं कि फेलियर हुआ नहीं, कम्युनिकेशन फेलियर हुआ तुरंत सिस्टम फेलियर में नहीं जाएगा. देयर इज ए टाइम लिमिट. अगर इस पीरियड में अगर वापस कम्युनिकेशन आ जाता है तो वो फिर सिस्टम एज जो पहला था रिस्टोर कर लेगा. बट एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के बाद भी अगर कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं है देन इट विल गो फॉर सिस्टम फेलियर. तो वो मार्जिन है, ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो है. सर इसमें एक क्वेश्चन, ये जैसे इसमें लिमिटेशंस में जो प्रेजेंटेशन के लिमिटेशंस में बताया था कि ये लाइन ऑफ साइट में काम करता है, तो बहुत से सेक्शन होते हैं जहाँ कर्वेचर होता है, तो ये कर्वेचर में प्रॉपर वर्क करेगा फिर ये एक्चुअली जिस पिंक एरिया था ना जो आपको टावर ज्यादा लगानी पड़ेगी. यूएचएफ जो कम्युनिकेशन होता है, सेम ट्रैक पे दोनों गाड़ी आएंगी तब लाइन ऑफ साइट पे वो मतलब वो यूज रहेगा. अदरवाइज I'll explain. Sir, this actually where there is no signal, sir, there is no communication requirement at all. In absolute block section, once signals are available in the station only, or LC gate only, or IB only, that's all. There only signal is required. Sorry, there only tower coverage is required. Other than that, where there is no signal, there is no requirement of communication. What I have told, whenever two trains are coming on the two track in the block section, let us say for example, there loco to loco communication will be there. Generally, all our tracks and all is communication is established through VHF. But sometimes it may occur. That's what we are not giving as a guaranteed SIL4. Silver means highest safety. We are telling this will work for that purpose. Head-on collision will be a SIL4, SIL0. SIL0 means मान सकते हैं safety is not so safety critical, but it will act like that. Means 100% guarantee नहीं है ऐसा बोलने का. बेसिकली ऐसा है, मान लीजिए एक आप ये कहना चाह रहे हो कि कर्व पे है, मान लो दरा सेक्शन में एक लाइन पे डेवलपमेंट हो जाए, वो उसको इन्फ्रिंज कर रहा है, तो मे बी अगर लाइन ऑफ साइट वाला अगर होगा तो काफी पहले ब्रेकिंग लगा देगा. बट जैसे भी लाइन ऑफ साइट में आएगा ब्रेकिंग तो वो करेगा. मे बी की हो सकता है कि टकरा जाए लेकिन कम स्पीड से टकराए. मेनली जो आपका इश्यू है वही टेक केयर करने के लिए इनके नंबर ऑफ टावर्स बढ़ गए हैं, क्योंकि उसी के लिए RSSI सर्वे है और उसमें ये देखा गया है कि शायद कर्वेचर की वजह से ही नंबर ऑफ टावर्स इंक्रीज किए हैं. रीजन वही है जो आप बोल रहे हैं, बिकॉज लाइन ऑफ साइट है, कर्व हो गया तो उन्हें उतना सफिशिएंट पावर का रिसेप्शन नहीं मिलेगा, तो इसलिए नंबर ऑफ टावर्स बढ़े हैं. तो वो टेक केयर करना होता है, इसीलिए इनिशियली ये सर्वे करा के देखते हैं कि वो सफिशिएंट कितने टावर्स लगेंगे, उसी हिसाब से काउंट होता है. सर ये सिस्टम तब तक इफेक्टिव नहीं रहेगा जब तक सारे RFID टैग वगैरह लग जाएंगे और लोगों के पास भी ये सिस्टम होना चाहिए, तभी तो इफेक्टिव होगा ये. नहीं yes, वो RFID तो 100% लगेंगे पहले. जी सर, वही मैं कह रहा हूं. स्टेशनरी वाले हैं और बाकी तो ट्रांजिशन वाला है. जब स्टार्टिंग फेज होगा तो सारे ट्रेन्स कवर नहीं होंगे. जिन दो ट्रेन में लगा है वही एक दूसरे से. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन सर अब आ रहा है. ये तो ये जब भूमिका थी उसकी, ये 2005 से 9 के बीच में एंटी कोलिजन डिवाइस का भी एक ट्रायल कोंकण रेलवे में हुआ था, जिसमें लगभग 12 लोग को कवर किए गए थे. और उसके बाद में वो ट्रायल इसलिए फेल हो गया क्योंकि सारे लोगों को कवर जब तक नहीं होंगे तब तक वो एंटी कोलिजन डिवाइस काम नहीं करेगी. तो इसमें ये 100% श्योरिटी इसकी कब तक हो जाएगी, या सारे लोगों को कैसे कवर करेंगे, उसको पर्टिकुलर सेक्शन कैसे कवर करेंगे? फेज वाइज होता है. इसमें यही है कि सारे लोग जल्दी से पूरी इंडियन रेलवेज को लगा तभी जल्दी से कोऑर्डिनेशन करें, जल्दी से टेंडर करें. सारे लोग कोऑर्डिनेशन में काम करें तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सर. और सर एसईडी का तो मैंने एग्जांपल दिया जस्ट मतलब मैं ये जो अभी कहना चाह रहे हैं डायरेक्ट RDSO कि इसीलिए सबको बैठाया हुआ है कि जितनी जल्दी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा दोगे तो फिर दूसरे सैंक्शन हो जाएंगे, वहां भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. तो जितना जल्दी फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाएगा उतना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. तो एफिकेसी तो सिस्टम की
ये तो फेजेस में आएगा, लेकिन phases में। स्पीड वगैरह ये तो सर एक ट्रेन ऐसी है जिसके लोको में इक्विपमेंट लगा है और सामने वाली ट्रेन के इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ है उसमें, तो स्पैड तो इसको रोक लेगा वो, लेकिन कोलिजन जो है वो अवॉइड नहीं कर पाएगा, जब तक कि 100% नहीं हो जाता है। इस सर स्पीड में क्या है कि सपोज रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया, ईबी लगाएगा, ईबी लगाने के बाद भी वो ही विल परमिट आपको कि ही नोन कि हमने रॉन्ग डायरेक्शन में आ गए, इट इज नॉट ब्लाइंड वे, he has to stop, speed will come to 0, he has to then post it, he has to go only 15 kmph, this is not like this he can go full speed, no. तो वो एक्सीडेंट नहीं होगा ना, फिर तो सेबोटाज हो जाएगा कि वो उसने अब रुकने के बाद फिर उसने चलाया तो लगा। सिस्टम इज सिंगल, सिस्टम एक है, वो तो कैब इंस्ट्रूमेंट दो होंगे, डिस्प्ले कैब both side, whichever side is in the active this, that will be operating, other only display will come, he cannot give the any command नहीं दे सकता, केवल वो डिस्प्ले करेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन तो बहुत हो सकते हैं। नहीं पूछे। धन्यवाद सर। हाँ नहीं, अब मैं एक मिनट किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, इसमें जैसे बाद में लोको में एयर ब्रेक कन्वर्जन जैसे हुए थे, तो लोको में पैसेंजर अलार्म चेन ब्रेक सिस्टम लगाया गया था, पीटीबी सिस्टम, उसकी एक छोटी सी डिब्बी होती थी, छोटा बॉक्स होता था और केबलिंग होती थी उसकी, तो ये सिस्टम क्या उस तरह से लोको में बाद में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है? क्या चीज सर? जैसे एयर ब्रेक कन्वर्जन जैसे हुआ था वैक्यूम से, उसके बाद में तुरंत पैसेंजर अलार्म चेन ब्रेक सिस्टम लगाया गया था, जिसमें ट्रेन पार्टिंग होने से या बीपी पाइप अनकपल होने से सिग्नल मिलता था और ब्रेकिंग हो जाती थी। वो सारे लोगों में, डीजल शेड में भी और एसी लोको में भी, सारे लोको में फेज मैनर में लोको के कमीशन के समय या ईयरली शेड्यूल के समय लगा दिया गया था। तो ये वाला इक्विपमेंट क्या इस तरह से लगाया जा सकता है? अब वो इसमें ये वाला तो लगेगा ही ना, ये तो लोको में लगेगा कर सकता है। ट्रेन पार्टिंग की जहां तक बात है, इसमें ट्रेन लेंथ कैलकुलेशन होता है, तो आपका पार्टिंग होगी तो जो एक प्रिस्क्राइब डिस्टेंस के बाद में वो फिर ट्रेन लेंथ जब कैलकुलेट करेगा और ट्रेन लेंथ मैच नहीं करेगी तो उसमें फिर ब्रेक लगा देगा। तो पार्टिंग कैन बी कवर्ड। ये ज्यादा एडवांस्ड वर्जन है, तो उसमें वो इक्विपमेंट क्या है उसके बारे में आइडिया नहीं है, इसलिए कमेंट नहीं। वो तो मैंने एग्जांपल दिया कि उस तरह से लोको में लगा दिया गया था, उसको केबलिंग कर दी गई थी अर्ली शेड्यूल के समय या मेजर शेड्यूल के समय। ट्रेन लेंथ ये सर पार्टिंग होगी तो छोटा हो जाएगा, हर स्टेशन पे दिया हुआ है, बीच में नहीं। सर इसमें एक क्वेश्चन और सर, ये सर जैसे ड्राइवर्स तो मैनुअली, हर ड्राइवर्स की टेक्निक अलग अलग होती है ड्राइविंग की, तो कोई ड्राइवर जैसे सिग्नल पे रोकने के लिए काफी पहले से ब्रेकिंग कर लेता है, स्पीड स्लो करके लाता है, कुछ लास्ट में लाके फुल ब्रेक एप्लीकेशन करता है, तो इस केस में जो डिस्टेंस इसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग का फिक्स किया हुआ है, ये उससे मैच कैसे हो पाएगा? हर ड्राइवर की टेक्निक तो अलग अलग है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो वो डीएमआई वाला अगर होगा तो दिखा दीजिए इसको। डीएमआई में मेंशन होता है कि आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे आप कितने मैक्सिमम स्पीड से जा सकते हैं, आपको उससे जो ड्राइवर रहेगा उसको उसके नीचे या उससे मैक्सिमम 5 kmph मोर अलाउड है। तो अगर ड्राइवर को जो ब्रेकिंग लग रही है, अगर वो उससे ज्यादा ये सोचता है कि बहुत पास में जाके और तब हम बहुत ब्रेक लगाएंगे, तो वो आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। ये
उसी में बिल्कुल 5 kmph जो है सर, वो इसीलिए मार्जिन रखा हुआ है कि जैसे ही आप प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा स्पीड पे हैं उस समय, तो इट विल गिव अलार्म. इफ इट इज मोर देन 5 kmph, देन इट विल अप्लाई ब्रेक. स्पीड प्रोफाइल भी दिखाता है कि व्हाट स्पीड लोको पायलट परमिटेड टू रन particular location, particular this all thing is shown. If after some time he will be visual, first time he may not visual. दोनों चीज आ रही हैं, both things are coming. स्पीड एनवेलप होगा ना, difference 5% within 5%, तो कोई दिक्कत नहीं. 5% से एक्सीड करेगा तो उसको सिर्फ अलार्म है. 10% से ज्यादा है तो देन ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग टाइप ही रहेगा. ट्रेन फिर डेड स्टॉप होगी, उसके बाद ही स्टार्ट होगी कि ट्रेन कंट्रोल करेगा इसमें? नहीं, केवल कंट्रोल करेगा. केवल कंट्रोल. और जैसे ही प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में आएगा तो फिर ड्राइवर को नॉच देना पड़ेगा उस हिसाब से अपना एडजस्ट करके. धन्यवाद सर. अब मैं आदरणीय डीआरएम सर से अनुरोध करूंगा कि वह कार्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त करें. आदरणीय डीआरएम सर. Respected Principal CST sir, CST project sir, senior officers from South Central Railway, Mr. Rao especially, and Deputy CST project, and other officers who have joined from South Central Railway, Director RDSO, Assistant Director RDSO, my colleague officers from Kota Division and 160 kmph project team. KAVACH is a very novel and innovative scheme of Indian Railways and is a part of Atmanirbhar Bharat. It has been decided that this system will be adopted all over Indian Railways for bringing down the rate of accidents, to avoid collisions, to avoid signal passing at dangers. And as a part of 160 kmph project in New Delhi, Mumbai and New Delhi, Havra corridors, and our division being the one of the longest stretch in the New Delhi Mumbai corridor, just parallel to, I think, Allahabad division in New Delhi Havra section. This is a new thing, so it's better that we understand the basics. What system, what is the system like, and what are the main features? Because we'll be working to implement it, we'll be using it. So it is necessary for all branch officers to understand it. What are the basic features? How it will operate? How will it'll affect the working of other departments also? It will affect engineering. It will affect TRD. It will affect operations. So the earlier we get to know about this, better prepared we become. The talk was very, very informative from RDSO as well as from South Central Railway. From South Central Railway, it was more important because they have already implemented. They are in the process of implementation. So their experiences during implementation and during operation are very, very vital. So we need not reinvent the wheel. जो learning South Central की हैं, we can straightforward adopt in our implementation phase, and we can be well prepared to face the challenges during the operational phase. I really want to thank Principal CST sir that for organizing this talk. This talk was organized at a very short notice, and Principal CST he has
spare time to be available in this seminar and interact with all officers and give his valuable contribution. I also want to thank CST project and RDSO team, and the seminar has been very, very interactive and very, very informative. Thanks a lot. थैंक यू सर। अब मैं एक सेकेंड, आई रिक्वेस्ट डिप्टी सीएसटी प्रोजेक्ट एंड सीनियर डीसीएम एक छोटा सा इसकी प्रेस रिलीज बना लीजिएगा, ठीक है ना। और जो हम लोग की इस मंथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहेगी ना, तो उसमें जो वीडियो पार्ट है दैट विल यूज। अब मैं आदरणीय पीसीएसटी सर से अनुरोध करूंगा कि वे कार्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय पीसीएसटी सर। श्री पंकज शर्मा, डीआरएम कोटा। सीएसटी प्रोजेक्ट मिस्टर मोहकर, मिस्टर वीएनएम राव, सीएसटी प्रोजेक्ट साउथ सेंट्रल रेलवे, उनके ऑफिसर मिस्टर मुनि कुमार, आरडीएसओ से आए हुए मिस्टर श्रीवास्तव एंड मिस्टर आरएन सिंह, all branch officers. So it was indeed a very excellent and informative session for all of us, because concept is very new, at least for WCR. We must be having so many questions in our mind before this presentation. I hope कि majority of them would have been answered, लेकिन अभी भी बचे होंगे तो हो सकता है एक आध राउंड और होगा तो उसमें कवर हो जाएंगे। बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है मिशन रफ्तार हमारे लिए, क्योंकि 550 किलोमीटर एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो हम लोगों को मिला है, और ये एज पर स्टैंडर्ड ऑफ स्पीड जो भी सिग्नलिंग की स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से ये एसेंशियल है कि बिना ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के आप 160 kmph की गाड़ी नहीं चला सकते। इसलिए ये भी है कि इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, ये हमें इम्प्लीमेंट करना ही है, और टारगेट भी बड़ा टफ मिला है। आई थिंक 2 साल के अंदर जो है मिनिस्टर साहब जो है बार बार इसको रेलवे बोर्ड लेवल पे रिव्यू भी कर रहे हैं। अभी जो प्रेजेंटेशन साउथ सेंट्रल का था वो तो हमें एग्जीक्यूशन और ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आई थिंक इट वाज वेरी यूजफुल। मैंने भी बहुत सारी चीजें अभी पहली बार ही देखी कि अदरवाइज इतने सारे क्वेश्चंस थे कि अच्छा कैसे हम अपनी टीम कैसे कैसे सोचेगी। काफी सारे क्वेश्चंस के जवाब जो है उनके उससे मिले हैं। थैंक्स टू मिस्टर राव एंड मुनि कुमार। और इससे पहले मिस्टर श्रीवास्तव और आरएन सिंह साहब से तो खैर अपना 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ ही है। बहुत सारे सवाल जो है निकल के आ रहे थे, तो आप लोगों को हम जो है आगे भी तंग करते रहेंगे, आपको भी, और सबसे ज्यादा तो साउथ सेंट्रल वालों को हम लोगों को इनसे वो रखना पड़ेगा। और ये तो दोनों दूसरी रेलवे या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के हो गए, लेकिन जो हमें अपने अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जैसे कि टावर डिजाइन को लेके जो सिविल इंजीनियर्स के अप्रूवल्स वगैरह उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आई होप कि इस प्रेजेंटेशन से ये सब भी आइडिया लगा होगा कि भाई किस तरह से क्या क्या इन्वॉल्वमेंट किस किस का रहेगा। चलिए अभी तो लंच का टाइम हो रहा है, इसमें ज्यादा स्पीच ना देते हुए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू नेमा एंड टीम ऑफ कोटा डिवीजन एंड सीएसटी प्रोजेक्ट, जिनको मतलब लगभग एक हफ्ते पहले ही मैंने कहा था मैं आप कर लिया जाए, क्योंकि रेलवे बोर्ड वाले बार बार इसको प्रेस कर रहे थे। थैंक यू ऑल। धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय सीएसटी प्रोजेक्ट सर से अनुरोध करूंगा कि वे कार्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त करें एवं धन्यवाद ज्ञापन करें। सर। आदरणीय पीसीएसटी साहब, बीआरएम कोटा साहब, एडीआरएम कोटा, सीआरएसडब्ल्यू, सीपीएम इलेक्ट्रिकल, एफएंड्स इंफ्रा,
Mudit Kumar Srivastava and RN Singh, and VNM Rao CST project from SCR, Muni Kumar Deputy CST project from SCR. ये वैसे तो करीब 1.5 महीना पहले से हमें कहा गया था कि एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाए, बट इस बीच में फिर वो टेंडरिंग करने में हम दूसरे इशूज में एंगेज हो गए, तो वो नहीं हो पाया। तो इसलिए ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है कि सभी लोगों को एक मोटी जानकारी तो हो जाए कि ये सिस्टम क्या है और किसका इनमें कंसर्न्स होंगे। जैसे अभी सभी को अपना अपना समझ में आ रहा होगा, जैसे ऑपरेशन साइड से भी उन्हें लग रहा है कि यार इसमें ब्रेक ही अगर बार बार लगता रहेगा तो कैसा होगा, तो वो अपने कंसर्न्स बता रहा है। सबको एक जानकारी हो जा रही है सिस्टम की कि ये कैसे चलता है। और इसका प्रोमिनेंस तो अभी इस बात से भी आ गया है कि पार्लियामेंट में डिक्लेयर हुआ है ऑलरेडी कि 2000 किलोमीटर दिसंबर 2023 तक करना है। सिमिलरली अभी शायद 4th और 5th को ट्रायल किया ना मिनिस्टर साहब ने, रिसेंटली उन्होंने ट्रायल भी किया, उसके वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं। तो अब वो इस सिस्टम को जल्दी से जल्दी कमीशन करने के लिए काफी स्ट्रेस किया जा रहा है। तो उसी की एक प्रिलिमिनरी ये अपने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कि सभी लोगों को एक बेसिक जानकारी मिल जाए। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डीआरएम साहब ने बड़ा जल्दी इसको करवा दिया, मतलब हमने शायद थर्सडे ही बताया था सर, थर्सडे ही बताया था, बात कर ही रहते, शाम तक बात हुई, फिर शाम को कर दिया फाइनल की ठीक है कर लेते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक बार मेरी तरफ से भी डीआरएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी ब्रांच अफसर्स को आपने उतना टाइम दिलवाया कि वो सब अटेंड कर सके, नहीं तो सब आजकल मारामारी बहुत ज्यादा चल रही है। थैंक यू। धन्यवाद सर। सभी अतिथियों से अनुरोध है कृपया वर्किंग लंच हेतु ऑफिसर्स क्लब में पधार कर अनुग्रहित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।